on the server. Okay, everyone. The server is basic. Servlet is what? That things that can execute it on server. Just remember that any servlet is not executed on your machine. If you're running, you know that you require to running the any servlet, you require a one server. यानी आपको एक servlet को अगर run कराना है तो हमें किसकी जरूरत होती है? Servers की. आप कोई भी वेबसाइट उठा के देखते हो तो क्या होता है? Everything is running on a server. You are just getting a response from that particular server. यानी जब भी आप कोई रिक्वेस्ट करते हो, रिक्वेस्ट की एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है, वो रिस्पॉन्स कौन जनरेट कर रहा होता है? सर्वर. और रिक्वेस्ट को ले जाना और लाना, इन दोनों का काम आपको कौन करता है? दैट इज डन बाय सर्वलेट. एग्जैक्टली. बहुत सी अदर चीजें भी हैं सर्वलेट के बाद. जीएसपी भी है, बट सर्वलेट इज अ मेन कंपोनेंट. प्लीज ध्यान रखना हमेशा. जीएसपी इज द एक्सटेंडेड वर्जन. मैं आपको आगे जब हम लोग चलेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि व्हाई servlet and JSP both are same. There's a little bit difference, but why? So that we can discuss on the another time. So now basically I can just tell you there's a when we talk about the servlet, we have to understand some points. Okay, so I'm just sharing my screen. I hope so then you can get everything. Okay, so now you can see what we have right now seen. There's a one notepad. So what is first thing? Servlet. What is servlet? Servlet is basically one interface. Servlet is what? Servlet is one interface. And then after this, we have another servlet that is called generic servlet. Generic servlet. So we have ideas, we have everything, how we can do the work and everything. So now, so we can say what? We have a different kind of servlet. Okay, so first thing is a servlet, the second is your generic servlet, and the one most important thing is called, that is called HTTP servlet. All these three types you are aware, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now what is the difference between these three servlets? Can anyone tell me? Anyone? We're just doing a one recap quickly and then we can move on the coding part as well as. So what is the difference between servlet, generic servlet and HTTP servlet? Okay, if you're not aware, okay. I just want to understand. How many people is aware about the concept of generic? Sir, generic is a protocol independent and HTTP is a protocol dependent. Exactly, that's correct. As you can say, the name is saying itself, generic. Generic in the sense it's common. It's the common. And servlet itself a servlet. That's why we can say generic servlet is a one servlet that can work for any kind of protocol. Servlet is a basically an interface, so you always require to implement this server. A servlet we need to implement. So generic servlet implemented this servlet class. You can say it's a class, either you can say it's the interface, but generic servlet implement which part? A servlet part. The servlet should be a part of, means you can say servlet is a superclass of this section. So generic is what? It's a servlet is a superclass of generic servlet. Now HTTP servlet is only understand about which concept. HTTP servlet only handle the request of HTTP or HTTPS, right? And that's why you can say this is called the
HTTP servlet. This HTTP servlet inherit which class? Extend generic servlet. Got it, everyone? These are the major functionalities. Now, after that, when we are coming to this point, what we need to understand again, this servlet mainly contains 5 methods. When we are talking about the life cycle of any servlet, we have majorly 5 types of functionalities. The first thing is called init. The first function is called init. Init means when we have to instantiate any object of any servlet, we need to use the init class. After that, we have another call that is called service. Yes, किसी के में ये दोनों फंक्शन क्लियर हैं? What is the work of service? रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस से शेयर करता है सर. Yeah, रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस भेजता है ना सर. exactly. And then we have a majorly other function that is called destroy. Means when your work is done, we need to destroy that object. So question, आप लोगों के मन में एक question भी आता होगा, what is the purpose of this destroy? Delete. हाँ, हम क्यों करते हैं? Why we need to delete this? When we terminate the server, it should destroy the servlet service. नहीं, एक अभी भी मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन ही पूछा है. पर्पस क्या है? हम सर्वलेट में डिस्ट्रॉय फंक्शन क्यों रखते हैं? नो आइडिया? सर्वलेट को रिमूव करने के लिए सर्वर से. एक सिंपल सा वर्ड, आई होप सो आप लोगों को एक सिनेरियो पता होगा. मेमोरी सेक्शन समझते हो? मेमोरीज. Yes, sir. सो एक सिंपल सा वर्ड ध्यान रखना. मैंने कहा आप एक साथ 1 लाख लोगों ने रिक्वेस्ट किया सर्वर को, ठीक है ना? सर्वलेट रिक्वेस्ट को गेट करता है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाता है और उसको होल्ड करता जाता है. तो इस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम होगी कि वी हैव अ लॉट ऑफ स्टोरेज वी रिक्वायर्ड. यानी सर्वर पे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे एक टाइम पीरियड के बाद, तो क्या होगा? वो अननेसेसरी मेमोरी का यूटिलाइजेशन करते रहेगा. एंड दैट्स व्हाई वी ऑलवेज नीड टू मैनेज दिस थिंग. यानी once your task is done, the servlet should automatically destroy. Got it, everyone? Because देखो, आप लोगों को क्या लगता होगा? मीन सिंपल सा वर्ड समझना. आपके लैपटॉप में 1 TB डेटा है, there's no problem. You can use it as much you possible. So what happens? Servlet is never removed. Its object is removed from the memory. Servlet is always there. Tushar, servlet is not going anywhere. Its object will be removed from the container where the servlet is running. So that what happened? We can get a memory. So no fresh request is coming, and then we can again able to log in, and then we are again able to do another type of work. And that's how you can say this is the major life cycle. Init, service, destroy. Init means when the instantiation will be started with the first system. After how much any process which you want to do, you can do the work with the help of in service. Everything will be done on the service part. And then we have a destroy section. Then we have a destroy section. In destroy section, what happened? All the object means the object that is not required to use, that will be destroyed automatically. So this is the basically a life cycle of servlet. But when someone asks how many function in the servlet, so majorly there's a 5 functions. Majorly how many functions are there? 5. 5 functions. Okay, I will explain later on again. So those points.
But now I hope so the servlet basic information is clear to everyone. Okay. So now we can move on the generic servlet. So generic servlet do the same work. It just inherit that class and implemented all the things. Now, if you maybe someone is आप में से बहुत से लोगों को question होगा how we can do the work. I can just show you. Already have something, so I can just show you there. You can see. We can create a one normal class. Okay. This is two ways. We have to create a servlet and then we can run this and all. So now that's basically what happened when we can create any class. Obviously, we need to create what? A servlet. New, and then we can run as a servlet. And then we can say what? See, it is exporting which class? HTTP servlet. So that means what? This package already saying we need to use this package, this super class. So now we have an option which in which package we have to import, so we can create here. And then we have a class name. We need to provide the class name. So what we can say? Yes, sir. Your ID screen is not visible. No, just a minute. Just I think I just share the only one window. That's why you're not getting. Just yes, sir. okay. Now you are all able to see. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now I hope so. In the same way, you have created the servlet classes. So now what we need to do, we can say means first, yeah, partner servlet. Okay, now we can say what? We can say finish. Yeah, if you want to do the work is this, there's no problem. If you want to use asynchronous support, you can use it. Next, I can say there's a lot of function there. Now, already I have tell you about two functions. One is called init, one is called destroy, and another we have to say services. These are the two another component that is called get servlet config and get servlet info. These are the two another function of your servlet. Okay. When we are using the HTTP servlet, then we have these things. All are there. There's a concept is do get. We have a do post. We have a do put, do delete, do head, do option, and do trace. There's a lot of functions is available in your HTTP servlet. HTTP servlet के अंदर उनके अलावा भी मेजरली ये सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं. 5 फंक्शन कौन-कौन से हैं? Init, destroy, service, get servlet info, and get servlet config. So related to the config related information, we have to call the get servlet config. And for the getting the servlet information, we can use the get servlet info function. So these are the majorly 5 functions in the servlet interface. ये पांचों क्या है? Servlet interface के part है. But यहाँ जब हम बात करते हैं do get do post की, तो ये mainly आपको मिलते हैं किसके अंदर? That you can get inside the generic servlet. Clear everyone? Sorry, in the HTTP servlet. Now we can say finish. See, so everything is look like this. I hope so you are able to see this part. Am I right? I can delete all these unnecessary things right now, so that you can only get the code that we require. Okay. So now you can say there's a one tag that is called web servlet, and then we have provided the asynchronous support. Yes. And then we have a URL pattern. You can change this URL pattern as well as in the next scenario means we can change this URL pattern as well as. Now we can come back to this section. See, do get and do post. I hope so you are seeing two different questions or two different functions. Am I right? Now question come in mind again. What's the difference between do get and do post? Anyone? In do get, sir, in the URL data is provided. Okay. And do post, you won't get data in URL. The data is posted through form.
submission. Okay. So we are going to do one thing, and I hope so then you are able to understand the things. I can delete all these things. The code is written there, everything. Okay. I remove everything. Now what I have typed there. So what we can say, we need to what we can use. Basically, when you want to print anything on the browser, we need to require a print writer. What we need required? Print writer. That is a class. That is a class. You can see it's coming from the IO section. Okay, everyone. Now, print writer, we can say we can give the name is out. When you created the things automatically, it will be out variable will be created, but now we are creating out equal to. What we need to, how we can get this print writer? So we can say response. Understand? We have to write on the browser. That's why we need to use the response dot get writer. If this point is clear to everyone, why we are getting a writer from the response? Because we have to write on the browser, and that's why we require to use the response section. Now we have an out variable. If you write anything is out dot println. There's a two different scenario. We can use append as well as, but we are using the println. Now this thing, what we can mention here, we can simply say here in double quotes, we can provide here do get. You can say from do get. Okay, the same thing we can copy and paste in this section here. And what we can say here is do post. Is both these 2 points is clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now if you are going to run this, अगर हम इस सर्वलेट को रन कराते हैं, suppose that, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? What the output we can get? आप सब लोगों ने प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है? प्रोजेक्ट क्रिएट करने में कोई इश्यू आता है? No, sir. Already created. नहीं, मैंने नहीं किया ना आप लोगों के सामने. That's why I'm just asking. There's no problem then. Okay. No. If you face any problem, just you can ping. Okay. Now, so what you can see there, we have a two function, do get and do post. Now if you run this, run as just a minute. Run servers. So it will take a little bit time. So that server is started. Now, so what the message you are getting here? Yes, all of you. Do get. Okay. So now how many get. times you can execute? Every time we can get a which type of request? Do get type request. Now, maybe I will explain later on why we can get only do get. If a request is normal, that is always a get type. And if you want to make any request is post type, you should have a form, and then it will be should be a post type mostly. Okay, na? So right now our request is a do get type. When you want to transfer, so do get ka mostly use kahan kiya tha? I can just tell you normally. When you want to move from one place to another place, means you have to go from the profile to some other location, then we can simply use the do get. But if you want to send some data on a server, then we can use which type of request? Do post. Do post. Means if you want to send a data on a server, we can use a which type of request? Do post request. Otherwise, automatically everything will be go inside the do get. Okay. But normally you can do another work. Normally we can do another work, and that work is what? We can do simply one thing. If you want to do one, and we have another one function that is called server.
No. So we have a service method. We can come back there and we can write. So now what we can do, we can say just copy this and copy and then paste it to there. And we can say from RESP is there, not the response. That way we can use RESP. Okay, now we can say from service. Now if I run this program, what the output? Output क्या होगा? Message क्या मिलेगा हमें server पे? Get, okay. Do get, correct. देखो यहाँ पे क्या होगा? सर्विस का भी कोई भी रोल नहीं होगा सी. तो बट यहाँ पे क्या हो गया? क्या आपने इसे फॉरवर्ड किया कभी? या फंक्शन आपने सर्विस से कॉल किया? नहीं सर. नहीं किया. तो देखो अगर आप चाहते हो कि रिक्वेस्ट किसी भी टाइप की हो, इट्स नॉट मैटर इट्स अ डू गेट टाइप आइदर डू पोस्ट टाइप. Which thing we have to invoke? From service. Already I told you majorly all the parts will be come up from service section. Anything, any work if you want to do, you just use this service function. So either you can override do post, either you can override do get and everything. But now if you remember, we have done another things also. We have deleted one function, I hope so you remember. Super dot this. This should be there. Okay. Now what will be the output? If we can refresh this page, what happened? See. Nothing is happened. So that's not a problem. So we can just simply use this part. Now, maybe you have also understand there's a concept is HTML. How we can use the HTML tag? Just you have to write everything inside this H1 tag. H1 is called heading. Heading 1. So now if you run this, you can see you can get the information in form of a bold type. Just a minute. You got it, everyone? Yes sir. Yes, Okay. So now that's what we can say. We can say if you want to make the bold, we can use this. Now we also have a tag that is called center. I hope so you are also aware about that HTML tag. I'm so not going to waste a lot of time on this section. We can say center. Now, so you can see we can again get this scenario. We have to refresh this. So now you're getting all the information in the center point. Now, if anyone have any kind of query in this section, then you can ask. If anyone have any confusion related to service, what is the difference between servlet and what is the difference between servlet, generic servlet, and what is the difference between HTTP servlet? No, Vishal, it is not happened. You can get all the input there. There's no problem. Basically, service will be come through. Now that's I can just told you that you can normally, if you override has what, you can say this part super dot the service. Sir. Now see. Sir. So what happened? Now you can see. First it will go for which section? Do get.
It go to the do get and then come to back to the Service. service section. So it doesn't matter ki what you want to do. That's why I can tell you. If this line is there, then you can get this kind of output. Why? Because it will be called the do get because we are using the super concept right now. So what happens? It will be called the do get functionality, and then it will be go to the service section because service app do all the process. That's why. If you're not using the service, still there's no problem. Then you have to make your logic on that either in do get, either in a do post. यानी आपको ये चीज यूज करना है कि आप कहाँ पे काम करना चाहते हो. नॉर्मली बेटर अप्रोच ये भी कहा जाता है कि यू कैन सेग्रीगेट द बोथ द थिंग. डू गेट का काम डू गेट में करके वहीं पे रख दो, डू पोस्ट से कर लो तो डू पोस्ट से कर लो. और अगर आप इन दोनों में कंफ्यूजन है तो जस्ट पास एवरीथिंग मींस यू कैन राइट लाइक दिस. वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज दिस. सी we have another way. Simply we can say what we can call service. Okay. So both the function is there. Copy this and paste it there. I have deleted the parent line, so there's no problem. So now we not require this. So now, if any task you are doing, all the go at the end of what? Where? In service section. Now. I think okay. In art now we not required to call this. It is invoke automatically. Sir, we need to destroy servlet. No, destroy is not required. Destroy So- automatically happen. Don't worry. सर्वर रिस्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है सर वो. Sometime basically it is working on the local environment. That's why what happens. Sometime it is happen. Now you can see from services coming. Either if you call this, maybe that time what happened, it is directly calling again and again. That's why this is happening. So now internally everything is already managed, so you're not required to mention this service functionality. Okay, now if you run this again, there's no problem. Then it will be happen again. Sorry. So we have to use not required to call this. Previously we need to call this, but internally right now they are managing all these things. So just ignore this line. But indirectly what happened, it will be invoking which function? It will invoking the service function. What happened to the... Now, clear everyone? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Now we have a come in a mind. There's a two things. One is called request dispatcher. How we can work with the concept that is called forward and redirect. So you are aware about this concept, forwarding and redirection. Yes, sir. Okay. So now see what happening in this section. Suppose that we doing any kind of work, then we can say this part, and then what we can say, we have there some concept, and we can say we want to redirect. So now we can say response dot send redirect. So now I have already one servlet. Otherwise we can create another servlet. So we can just pass that particular object. Suppose that. So now we don't have any kind of servlet information. That's why we can say we can create a one HTML page new, and then we can say HTML page
So now the name we can give there? We can say first and finish. So we can say title is what? First. Inside the body, we can use it the center tag. Then say welcome in Patna. Okay, something like this. So now when we run this application, we can transfer to this first.html. So we can type it the first.html. Now, if you run this, what happens? See what we are getting here. Redirection is happening, but it is not able to find anything because we are just passing the first HTML. Is slash is required. Yes. Now you can again run this. Now you're getting the message that you required. Okay, so now what we need to understand here, first thing, if you're passing anything, you just need to follow what? This URL pattern. Okay, how we need to call anything. So response don't send redirect. In that scenario, what happened? You can see everything is coming as a URL part. Means it is telling you the exact location where we are right now going. And that's why the mention is what? First.html. That means we are in a first.html page. Clear this point to everyone? Yes, sir. Okay. Now we can again do another work. Now we have a call that is called response. Sorry, we have to create the object of what? Request dispatcher. RD equal to, how we can get this? Request dot get request dispatcher. Now it is asking about where we want to go. So now we again provide the same thing, slash first.html. Comment this because we have to see the difference. Now what we can say, RD dot, there's a two function. One is called forward. So we can say RESP and REQ. And now we can run this again. Here I think you're not required to just put this slash. सर वो सर्वर को रीलोड होने में टाइम लगता है तो Yes. Hello. हाँ सर सर्वर को रीलोड होने में थोड़ा वक्त लगता है ना Every time we need to reload, I don't know why. This is some bugs actually. I'm just using the latest one. Now, so you can say, see the difference between both of them, this part and this part. Can you tell me what the difference in both scenarios? One is providing this URL and another is providing this URL. So now in this scenario, what happened? Where we are going,
मीन वेयर वी आर गोइंग, दैट मीन्स कहां पर हम हैं राइट नाउ, वो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देता है, दैट मीन्स कॉल्ड रीडायरेक्शन। एंड फॉरवर्डिंग मीन्स हम वहीं से बैठ के क्या कर रहे हैं, चीजों को फॉरवर्ड कर दे रहे हैं उस रिक्वायर्ड डिजायर्ड लोकेशन पे, बट उसको वो लोकेशन नहीं मिल रही है जहां पे एक्चुअल में आपकी वो फाइल होती है। सो बेटर अप्रोच कौन सा कहा जाता है यहाँ पे हमेशा? सर सेकंड अप्रोच। हमेशा फॉरवर्डिंग इज ऑलवेज अ बेटर अप्रोच, ठीक है ना। बट लॉगिन के लिए हुआ या बाकी चीजों के लिए हुआ, उन सब के लिए क्या होता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज एनी अप्रोच, ठीक है ना। अप्रोच दोनों ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दोनों में एक डिफरेंस, मेजर सबसे बड़ा डिफरेंस है, इन वन यू कैन नॉट पास एनी वैल्यू। जब हम रीडायरेक्शन करते हैं, सी अंडरस्टैंड, व्हेन वी आर डूइंग द रीडायरेक्शन, redirect, then we have a no object of anything, neither of request neither of response. See line number 37, क्या जब हम लोगों ने response dot send redirect किया तो क्या हमारे पास के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का? नहीं है। तो इस कंडीशन में हमें क्या फॉलो करना चाहिए? अगर आपकी ऐसी नीड है कि हमें कोई भी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट को होल्ड नहीं करना है, then better approach we can go with the send redirect. और अगर आप dispatcher देखते हो तो dispatcher what you can see, we have request as well as response object both. That means we can pass the value to another resource. यानी अगर हमें वैल्यू को एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स को पास करनी है तो we can easily pass it. Clear? अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज और भी नहीं किया है, आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड। अब हमने दो चीजें देख ली, rd डॉट रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, rd डॉट फॉरवर्ड, बट इसी के पास एक और फंक्शन होता है, इसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड rd डॉट इंक्लूड। We can comment this. Now we can run this again. We have to twice running. See. What do you have see there? The message that on the previous statement, that is also there. And that's why we can say that is called include. That means इसीलिए हम कहते हैं inclusion happens at source. बहुत से लोगों में आ रहा होगा कि everything is going to added on the first. No. यहाँ पे क्या होता है? When you're doing this include concept, what happens? This inclusion happens at the source. यानी जो हमारा inclusion होता है वो कहाँ पे होता है? Source पर होता है, ना कि वो होता है कहाँ पर? जो आपका डेस्टिनेशन होता है वहां पे। यानी डेस्टिनेशन पे जो चीजें उसे लाओ और यहाँ पे इंक्लूड करो, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन। इसी को हम बोलते हैं इंक्लूड। यानी डिस्पैचर को दो डिफरेंट फंक्शन, एक है फॉरवर्ड और एक है इंक्लूड। इंक्लूड में क्या होता है? इंक्लूड में आप ये काम करते हो, यू कैन जस्ट इंक्लूड द डेस्टिनेशन पार्ट एज वेल एज, एंड इन फॉरवर्ड सेक्शन व्हाट हैपन इज जस्ट फॉरवर्ड टू दैट डेस्टिनेशन। These are the major difference. और बाकी सारी वर्किंग सेम ही होती है, आपको कहीं भी डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, यू कैन सी neither in a forward neither in a include. आप किसी के और मन में कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है ना इस टाइम। सर यस, जो हमने रिक्वेस्ट डिस्पैचर डॉट rd डॉट इंक्लूड किया है तो वो सर्विस मेथड में किया है, तो सर्विस मेथड का ही जो कंटेंट है ऊपर का वो इंक्लूड करेगा ना वो? बिल्कुल। और बाकी हमने अगर नहीं, एनीथिंग दैट इज व्यू इज देयर, दैट एवरीथिंग शुड बी इंक्लूडेड। इसीलिए अगर आपके में डाउट है तो दैट्स आई कैन जस्ट डू वन थिंग, ओके, क्योंकि ये कहीं नहीं जा रहा है, ये क्या कह रहा है, डेस्टिनेशन पे जो चीजें हैं वो लेके आओ और यहाँ पे इंक्लूड करो। अगर डू पोस्ट तो जब तक फॉर्म नहीं आएगा तब तक वर्क नहीं करेगा।
एक मिनट जस्ट मैं बता रहा हूँ ना, डू गेट, ओके। ये एंड do यहाँ पे हम post क्या है लिख देंगे, पोस्ट यहाँ पे सर्वर। आएगा रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वी कैन कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, डू। ये ये do बराबर get है है, नीचे वाला। do post। So now we can save this and now we have to run this again now. अभी डाउट क्लियर हो गया? हाँ सर, मतलब इंक्लूड मैंने इसीलिए जितना क्या भी कहा, कंटेंट है। हाँ देखो, एक मैंने क्या सिनारियो किया कि ये कहीं नहीं जा रहा है, ये क्या कह रहा है कि डेस्टिनेशन पे जो है उसे यहाँ लाके क्या करना है, प्रिंट करना है। इंक्लूड करना है। मैंने जैसे सिंपल सा वर्ड ऐसे समझ सकते हो ना कि आप कोई काम कर रहे हो, तो काम करने के टाइम पे क्या होता है कि काम करने में दो तरीके, एक होता है आप वहां जाके काम करो, दूसरा तरीका क्या होगा, आप कहोगे नहीं आप वो सारी चीजें मुझे भेज दो, मैं यहीं पे कर दूंगा। सो इट मीन सिनेरियो कि आपने क्या काम किया, एक है फॉरवर्डिंग यानी जब आप खुद जाओगे, और दूसरा इंक्लूजन यानी जब वहां से चीजें आपके पास आ जाएंगी तब आप उससे वर्क स्टार्ट करोगे, दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन। तो यहाँ पे हम इंक्लूड वर्ड तब यूज करते हैं जब आपको कुछ ऐसा करना होता है। अदरवाइज क्या होता है, ये मोस्टली यूज किया जाता है जब हम किसी टाइप के कंडीशंस को मैप कर रहे होते हैं या कोई चीज होती है, तो दैट टाइम हम इंक्लूड एंड फॉरवर्ड का यूज कर रहे होते हैं। तो बस इन दोनों में एक जो मेजर कॉमन थिंग है वो यही है कि दोनों के पास रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दोनों की इंफॉर्मेशन क्या होती है, हमेशा रहती है। एग्जिस्ट करती, हाँ। ठीक है ना। तो अगर आपके पास रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दोनों के ऑब्जेक्ट है तो आपको कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा। नहीं होगा, ठीक है। और किसी के अंदर क्वेरी? Yes, anyone have any query? Okay, so these are the basically point, but इसका मतलब ये नहीं कि अभी इंक्लूड एंड डिस्पैचर का रूल खत्म हो गया है, ठीक है ना। हम फर्दर इन चीजों को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। सो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू अंडरस्टैंड सम कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं सबसे पहला काम क्या करना, चलो मैं एक सिंपल सा सिनेरियो दिखाता हूँ आपको। We already have one first.html सी, या हम यहाँ पे एक बना लेते हैं डेटा। हमने यहाँ पे क्या बना लिया, एक न्यू डेटा यानी HTML फाइल बना लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं data.html, and then we can say finish. Now, so we can say provide any information that you want to create data. Okay, and then what we can say, we can create as a one form. We already created a one form. Inside this, we can provide as a anything which you want to create, a user name colon. So what we can provide is a input type, input, and then we can say type text, and then we can use the name equal to name. Everyone. Now, after this, we can use the BR tag. Right now, we are not focused on designing part. We are just want to understand the conceptual things. Any concept wise, we have to understand all these parts. Now this, and then we can say name and the age. There's a two fields that is called user age. And then we have to create another form that is called input. And then we can say type, that is called submit. And value is what we can say send. And then inside the form, what we can say, we can use the get method. Get. Okay, so still that is not going to be work. That's why action is always required. Okay, so we can provide here the action. In the action, what we need to provide, we can
things later on, but first we can put a hash there. Okay, now you can run this and see that output first. That's coming correctly. Now if you click on this send, what happens? There's a hash, so nothing is happening. Now we want to send this request to this partner servlet. So we need to understand this. What is the servlet pattern? This. Copy this and come back to there and put inside this section. See. So we can say refresh. No. So you can see the action is happening. So when we can pass the get, you can see what we are getting here is a name and age. Now question come in mind, how we can get this data. So for that purpose, we have to come back there, and what we can write is, we can say out.println. And how we can get the data from the server side, means when the user is sending a request, then we can use the request, because the information coming from the request, and that's why you can use request dot get parameter. Okay, now what is the name of this attribute? Name. So what we need to follow here, we need to pass as the name. So double quotes and double quotes. We want to get this field from the server. And the same way again, we can use copy and paste. And what we can use here, what is the second field? Age. Age. So we can pass as the age. Okay. Now, if you want to do another work, just do one thing. If you want to break the line, double quotes, and then you can say BR. Otherwise, what happened? It will be printed in the same line. Because there's a no rule is work for println. Everything will be work as a HTML. So you have to write everything inside this particular block. Clear? Now run this. But before running, we have to come back there, and then we have to refresh this page again. We can close this. I hope so all these concepts is clear to you. Run. Fee. So we can provide anything. Manish. So are you getting this information? Yes, sir. Okay. Okay. Now we have to do another work. And that is work what? We have to do the same work is where we can say, if we can do this work is in the Patna, then okay. So this is the first thing. Now we want to send this value to another servlet. Suppose that we want to get this information in another servlet. We have already one thing that is first.html. So for that, we can create another servlet, and that name we can say data. Right click, we can create another servlet. जहां पे भी आप लोगों को कोई confusion होगी या कोई भी query होगी, you can just ask it. Okay. Now we are going to create another servlet that is called data. Sorry, data should be there. And there's we can say browse. So next, asynchronous and finish. So we can remove all these things. Anything that you want, you can use here. There's no problem. Okay. Now,
So question come in the mind how we can manage all the things and other things. So first thing we can do the work is copy the paste this line, 2 line. So there's a 1 line only to the both the functionalities. Do get and do. We are not overriding as a service right now. Okay. So now what question come in a mind? What we need to do there? So now when we're doing the for means forwarding, either we are doing the work is redirect. We want to get the value. So what we can say? We want to print as out.println. And what we can say pass is a println. We just simply say response request dot get attribute, and then we can give the name is name plus double quotes dr tag and semicolon. Now again we can copy this and we can paste it where? Control C, and we can paste it here, and dot what we can pass is the okay. So now what we have to do, we can come back to the Patna. We need to pass it this data. Come back to this Patna service, and then we can call as what? When we are doing the, so we can start with the redirect concept. Now, everyone focus. So we can start with the concept of redirection. So we can provide as what? Send redirect, and we can provide the name is something like this. Okay, so now we can save this, and then we can run this data for data.html. Run. You can provide any values, right? Manish 22 send. Okay, so we need to refresh everything again. In data, what is the URL? Okay, that's correct. So if you run this, it is happening. No problem. Rahul 24. Okay, so that is not required. Why it is happening? Okay, no problem. So now we can run this again. Our data. I run this. We can provide Rahul. And then we can say what? Anything you can provide and send. So we are getting here a null and null. Got it, everyone? We are getting here a null and null because we are not able to send the data to the redirect with. We cannot send the data with the redirect concept, and that's why we have a concept is called response dispatcher. This one. And in this scenario, what we can do, we have to do simple one work. And that is what? We need to bind this object. So we can say here, request dot set attribute, where we have called the get attribute. So we can say name. Just remember the name here. What the name you have provided, that you should be used in the second place. Request dot get parameter. Means when you're getting any value from the form, then we can use request dot get parameter. And when you are getting, you want to get any value from the request object, then we can use
request dot get attribute. So get parameter we can pass it the name. The same thing we have to do for the another part that is called age. And then we can say call here the age. And then we again say, okay, now we can save everything. Call this data.html again. Send. Okay, sorry, we have not made the changes. We are calling it the first.html. So what we need to provide here, we simply need to use here the copy and paste. But we are not required to use the slash at the beginning. So close all the things so that we can execute them. Now we can run this file, run as server. So servlet. Calling servlet from the servlet folder. That's why we're not required to push this JSP form. See. So are you able to get the data in another page also? Okay. But there's a one drawback. बताओगे क्या ड्रॉबैक है यहाँ पे आप सभी लोग? What will be the drawback there? Everything we can see in the URL. And this is not a good approach to showing all the information at the URL section. Okay, so इसीलिए first part ही कहा जाता है, you should always use the post functionality. What should we can use? We can use the post functionality. So now when you can do this work, okay, now you can type here anything. सर मेथड में चेंज करना होगा ना? Yeah. पोस्ट में करना होगा ना बाकी काम? डेटा में पटना सर्वलेट अच्छा सर, हमने सब कुछ पोस्ट में किया है ना, don't worry. Everything we have done on the service section. Okay sir. Okay, there's no problem. So that's why. So we can say 24C. Now we are not getting any data from Patna servlet. This thing is not happening. We need to close everything again and then we can run. Okay, sorry, हम लोग ने I think यहाँ पे वो नहीं किया है. यहाँ पे उन्होंने डू गेट में सारा काम किया है. ये हमें पोस्ट में रखना. So the thing is working, but we have not put this value on post section. Okay, and इसीलिए हमें वहाँ पे आउटपुट नहीं देख रहा था. ठीक है ना? So 9 and 23 अभी सेव नहीं हुआ. That's why this is not happened. See,
सो क्या अब यूआरएल में हमें डेटा एक्सपोज हो रहा है? नो सर। तो अब आई होप सो आप लोगों को दोनों का डिफरेंस पता चल गया होगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिक्वेस्ट डिस्पैचर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉरी डिस्पैचर और रीडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना. और फिर आता है डिस्पैचर के अंदर हमारे पास दो चीज होती है, वन इज कॉल्ड इंक्लूड एंड सेकंड इज कॉल्ड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड. सो अभी भी इन पॉइंट्स में किसी के अंदर कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है, अदरवाइज देन वी कैन मूव ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ JDBC. यस, किसी के मन में कोई क्वेरी? सो आई होप सो आप JDBC एक बार पढ़ चुके हो मेरे हिसाब से, एम आई राइट? सर एक क्वेरी थी। नहीं पढ़ा है, ओके. डेटाबेस सबने पढ़ा है? यस सर। हेलो सर, यस सर. इनको एसक्यूएल का आइडिया है, मतलब कनेक्टिविटी का बिल्कुल भी आइडिया नहीं, उसी के अकॉर्डिंग चलिएगा. ओके ठीक ठीक, नो प्रॉब्लम सर, ठीक है ना. ओके ओके फर्स्ट टाइम मैक्सिमम कनेक्टिविटी पार्ट कर रहे हैं. ओके, कोई दिक्कत नहीं है. नो, so for that purpose I hope so you all have MySQL, am I right? Yes, sir. Okay. I can open the MySQL and then we can start discussion on that. Okay. सर तो ये I जैम hope के so साथ मुझे कर सकते हैं क्या? या जैम के साथ कनेक्शन कर सकते हैं क्या MySQL का? हाँ, किसी जैम, देखो जैम सिर्फ सर्विस के लिए होती है, वो सर्विस स्टार्ट कराती है, सर्विस स्टॉप कराती है, जैम का और कोई रोल नहीं होता है. हाँ, अगर डेटाबेस हम लोगों को देखना है तो उसके लिए अपाचे उसका स्टार्ट करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे कुछ इशू आ सकता है क्या? नहीं साइमल्टेनियस नहीं 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 नहीं, बस ये ध्यान रखना है, क्या नाम है कौन, तो निखिल। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि मींस आपका उसके करंट जो स्टेबल वर्जन है उसी का ड्राइवर अवेलेबल होना चाहिए बस. आप कोई भी चीज यूज करते हो, ठीक है ना, उससे जो जैम्प होता है बेसिकली वो मैनेज करता है आपके सर्विसेज को. और जैम्प में मुझे जहां तक याद होगा बाय डिफॉल्ट जो आप कर रहे होगे उसमें कौन सा वर्जन MySQL इंस्टॉल्ड है वो बता दो, तब मैं बता देता हूँ. अभी लेटेस्ट वाला मैंने इंस्टॉल किया हुआ है PHP 8 का. नहीं, PHP 8 के साथ MySQL कौन सा बाइंड है ये बताओ, MySQL का वर्जन आई वांट टू नो. जस्ट अ मिनट सर, चेक करता हूँ. ओके, क्योंकि MySQL 5 और फिर 8 ऑनवर्ड जितने हैं ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा चेंजेस, जस्ट अ माइनर चेंजेस, दैट्स व्हाई. Okay, so MySQL workbench is open. Okay, I have to connect with this. MySQL is running in 3308. Just remember that. Your should आप लोगों का जो रन कर रहा होगा by default उसका पोर्ट क्या होगा? 306 होगा, ठीक है ना. So ये पोर्ट आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि विदाउट दिस आपको प्रॉब्लम हो सकती है. अगर आपने पोर्ट चेंज कर रखा होगा तो हो सकता है आपको इशू है. दैट्स व्हाई यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट. Mine is 330608. Okay. पासवर्ड इज व्हाट, इट्स योर चॉइस, आपने क्या रखा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना. हाँ सर, वो अभी सारा बता रहे हैं, जस्ट एक थोड़ा सा क्विक रिव्यू ले लेते हैं, देन वी कैन स्टार्ट ऑन दैट. तो देखो यहाँ से आई होप सो आप लोगों ने कैंसिलेशन सारी चीजें देख सकते हो, यूजर प्रिविलेज एंड ऑल दीज थिंग्स इज मैनेज देयर. जहाँ से आप डेटाबेसेस देख सकते हो, कनेक्ट टू डेटाबेस. ओके, तो लॉट ऑफ डेटाबेसेस यू हैव. ओके, तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस ये है, ठीक है ना. Standard, okay, there's no problem. Database schema if you want to you mention, okay, otherwise just left it. So कनेक्ट टू डेटाबेस में कोई चेंजेस करने हैं? नहीं, आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं उससे रिलेटेड. ओके ओके, ठीक है ना. So now we can come back to the
Okay, for 8.16, then Nikhil, you have to use another driver. Okay. Okay, sir. 13 version शायद नहीं होगा नारायण नयन. It should be a 8 point something version of MySQL. 8.0. Any means 8.x version you have maybe. So you can check that. So you can use the 8 point right now. I think 8 point something version of jar is available. You have to use this version of jar 8.0.28. This version jar is available. This is the latest one. Okay, everyone. तो सर ये जैम के लिए भी चल जाएगा क्या? हाँ, ये सबके लिए चलेगा. There's no problem. सर आप जो ड्राइवर्स बोल रहे थे एडिशनल लगेंगे वो किसके? यही ड्राइवर है जो आपको डाउनलोड करना होगा नेट से. ओके सर. ठीक है ना. अगर आपको चाहिए होगा मैं चैट में भेज दूंगा. यू कैन डाउनलोड इट. देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है सर. ठीक है ना. ओके. सो ये सारे पॉइंट्स सभी को क्लियर है. Okay, so now we have to move another concept that is called JDBC. So we can begin with the concept first. Okay, and then I can tell we can connect all the things using the concept of JDBC. Just give me 1 minute. Okay, so we can start now related to the JDBC. Okay. So we have to discuss with the concept of JDBC APIs first. So this is the first thing is called what is JDBC.
So basically JDBC is nothing. It's a provider API so that we can interact with any database. What we can do? We can interact with your database. देखो simple सा word आता है. API की requirements कब होती है? जब हम cross site चीजों से talk करना चाहते हैं, नहीं बात करना चाहते हैं. जैसे आप एक वर्ड यूज करते हो ना, ट्रांसलेटर एंड समथिंग लाइक दिस. तो ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट भी हमें कब होती है? जब हमें चाहिए होता है कि ऐसा इंटरप्रेटर जो बीच हमारी बात उसको समझा सके और उसकी बात हमें. इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड JDBC API. यानी जावा जो कहेगा वो JDBC के थ्रू हम किसको बताएंगे? डेटाबेस को. डेटाबेस जो हमें रिस्पॉन्स देगा वो हम विद द हेल्प ऑफ JDBC किसको दिखाएंगे? यूजर को. तो दैट थिंग इज हैपनिंग और इसी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी. ठीक है ना? तो हमें जो यूज करना है दैट इज कॉल्ड द फोर्थ. दैट इज द फोर्थ टाइप ऑफ वर्किंग इज राइट नाउ. So now what we need to understand on this scenario, so we can discuss all the things. So for this we can understand the first thing is called database. So what is database? I hope so you all understand for very brief and already, so that's why we not focus on that. A database in the enterprise, simply the we can say in current scenario, either in a previous scenario, data is one of the most important assets of any organization. किसी भी organization के लिए सबसे बड़ा asset क्या होता है? Data होता है. On top of data, we can do any kind of analysis and some other things as well. So that's why we can say data is always important. So database in the all corporate data stored in a DB database में. SQL standardized format, that is called we can say SQL. ठीक है ना? बट आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ SQL नहीं यूज हो रहा है, इसके अलावा बहुत सारी चीज यूज हो रही हैं. In future you can see a lot of changes there also. Okay, so now what we need to understand, entering the JDBC API 4.1, the JDBC, what we have one package that is called java.sql and javax.sql are the primary package for JDBC. Okay, JavaSQL, java.sql and javax.sql, both are the packages, both are the package which contain the classes, interface and other things, functionalities, and you can say function is also there, and that's why I can say it's called the package. The new feature in these packages include change the following areas: automatic database driver loading, exception handling improvement, enhanced blob and claw functionality, connection and statement interface enhancement, national character set support, SQL with SQL 203 means XML data type support and annotation. एनोटेशन सिंपली मैं अभी आपको बता देता हूँ. एनोटेशन क्या होता है? अभी आपने एक सर्वलेट पढ़ा तो सर्वलेट पे आपने एक टैग देखा, दैट इज रिटन इज @web सर्वलेट. इसी को हम बोलते हैं एनोटेशन. यानी आपने इतना लिख दिया, इसका मतलब बाकी चीजें ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा कि ये जो फंक्शन है वो किस टाइप का फंक्शन है. यानी ये जो क्लास है ये किस टाइप की क्लास है. एवरीथिंग शुड बी कम विद दैट पर्टिकुलर एनोटेशन, एंड दैट्स व्हाई एनोटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है राइट नाउ. ठीक है ना? आगे जब आप बहुत मींस यू कैन गो फॉरवर्ड, देन at the end you can understand ki why annotation is so much useful. So anything you can see with the @ symbol, that is called the annotation. Got it everyone? Okay, so now what you understand first, JDBC architect. The JDBC API support both 2-tier and 3-tier processing model for database access, but in general JDBC architecture consists of 2 layers. The first thing is called JDBC API. This provides the application to JDBC manager connection, and the second thing is called JDBC driver API. This supports the JDBC manager to driver connection. Okay, how we can establish the connection between two, means with the help of using the Java to another resource. The JDBC API use a driver manager and database, a specific driver to provide a transparent connectivity. We have some APIs already, but we always require a database driver, because driver can hold all the information related to the database. Okay, what is the encryption algorithm is there? What is the encrypt means? How it is managing the things and everything. So that's why you require the drivers. Driver understand everything, and then your Java code is talk with that particular driver, and then you have to process.
and that's why you can say this is called the JDBC architecture. So just remember, ऐसा भी नहीं है कि आपके पास एक ड्राइवर है तो आप Oracle को भी कनेक्ट कर लोगे, JDBC को कर लोगे, सभी को कर लोगे, नहीं. For each type of databases, we have a different kind of database drivers. Clear everyone? यानी क्या है, हर डेटाबेस के लिए आपको डिफरेंट टाइप का क्या चाहिए, ड्राइवर चाहिए. और आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी टाइप का डेटाबेस यूज करना चाहो यूज कर सकते हो, बट आई बेसिकली प्रेफर यू कैन यूज द MySQL. ठीक है ना. कनेक्शन सेम होगा, कनेक्शन में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बट रिमेनिंग ऑल द फंक्शनलिटी इज सेम. बाकी जितनी भी फंक्शनलिटी होंगी वो क्या होंगी, सब में सेम होंगी. तो सभी लोगों को यूज क्या करना है, MySQL. ठीक है ना. MySQL सभी लोग यूज करेंगे, ठीक है ना. अगर नहीं इंस्टॉल है, अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने कुछ और इंस्टॉल करना है रखा है, तो वो भी आप बता सकते हो, देन वी कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली. बट माय सजेशन ऑलवेज MySQL. It is a free to use, and that's why there's a no problem. And it is also means it does not take much process as compared to your Oracle and other DBs. So that's why it's a lightweight. We can use it, understand everything, and then we can process. Okay, so we can move on now. Okay, so we have to go with the MySQL, and everyone can use the MySQL 8 and above version, not below this. Okay, everyone. Okay, now. So now, what is the JDBC goal? The first thing we need to understand. What is the first goal? Either what is the primary goal? The primary goal is SQL level. It's SQL level. Means in JDBC we can provide all kind of SQL thing. There's no problem. Second thing, it's 100% Java. That means we're not involved in another field. We can just follow the rule of Java, and then we can able to do this kind of work. Third is keep it simple, very simple, high performance, leverage existing database technologies. Right now, I hope so. जितनी भी technologies available हैं, जितने भी databases available हैं, सभी को support करता है आपका Java. There's no limitation. You can use any type of database. You can use any type of database servers, and no, use strong static typing whenever possible. Use multiple methods to express multiple functionalities. So we have a multiple method to express multiple. यानी एक ही function different kind of work भी कर सकता है. कैसे करेगा? That we can see in a later on. We have update. So update can do all kind of work. It's update the table, it delete the table, it modify and everything. So that means one function can do a different kind of work as well. And that's we can say that is called the JDBC code. Okay. So these are the basically JDBC codes now. Now we come to the JDBC architecture. Okay. The first thing is your application. The application that you have made. And then you require the JDBC connection. Means we have to write a one class that is contain the information regarding the JDBC. That means Java Database Connectivity. And then we have to forward to the drivers. Then we have to follow to the driver. That means how this driver can work, how we can. So driver can talk to the database server. And this connection load this driver, and driver interact with the database. This should be happen. Driver talk to particular driver can have more than one driver, more than one database. देखो एक डेटाबेस से हम एक से ज्यादा मींस डेटाबेस से टॉक कर सकते हैं. There is no problem. Database in the sense कि हम क्या क्या यूज कर रहे हैं and all. That's why idle can change database engine without changing any application code. आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कोई अपडेशन भी करना है तो आपको कोड सेक्शन में चेंज करने की जरूरत नहीं. जस्ट गो एंड मेक द चेंजेस ऑन your driver loading and other things, and the things is over. Now you are able to use this particular application again. So आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ सकता है, या ड्राइवर कैसे लोड हो रहा है वो दो चीज चेंज करेंगे तो आपको कोई भी और चेंजेस करने की जरूरत नहीं होगी. आर्किटेक्चर क्लियर सभी को? दिस इज योर एप्लीकेशन है, जो हम अभी बना रहे हैं वो हमारा एप्लीकेशन है. फिर आप आता है JDBC, and then we have a driver, and then we have this.
Clear to everyone? Okay. That's good. Now we can come back to the JDBC driver. How many type of drivers is there? The first type is of driver is called bridge driver. The first type is called bridge driver. Second type is called native. Third is called middleware, and the last one is called pure. And we are going to use which one? Fourth type, that is called pure. Bridge driver is approximately absolute, and native is also approximately right now absolute. Okay, everyone. So we can understand one by one first, and then we can move on another type now. So now this is the type of driver you can, as you can see there. The first type, bridging, we need to concept of ODBC, and then we require the ODBC driver, and then we are able to talk to the database. Means bridging, then ODBC, and then ODBC driver, and then we require to access the database. So this is basically a process. So I hope so जिन्होंने पहले काम किया होगा, तो हम जब MS Access पे कोई एक्सेस करना होता था, डेटाबेस बनाना होता था, तो हम क्या बताते थे, सिस्टम के अंदर ODBC सेट करते थे, and then we are able to use this ODBC driver. Now the second thing is called type 2, that is called the native lab, and that is called the use the CLI, yani command line interface library we need to use, and then we are able to talk with this database. Third is called middleware. So in that scenario, what we have to manage, we have to manage the middleware server. Yani to handle anything, we need another server. To means to use this. Himanshu, for the ODBC, I can just show you. Means if you go to the control panel, okay. So there's a database. Just I can show you. Go to the administrative tool. अब यहाँ पे होता है नहीं होता, that I'm not sure. See, you can see there's a concept is called ODBC data sources. Are you able to see? So यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे हम चीजों को सेटअप करते थे कि पहले यहाँ पे आते थे, देखो यहाँ पे डेटाबेस एक्सेस होता था, फिर हम सिस्टम डीएसएन बनाते थे, फिर फाइल डीएसएन एंड जो भी चीजें हमें और करनी होती थी, एंड जब डीएसएन बना लेते थे फिर जाके वहां पे कनेक्शन को एस्टैब्लिश करते थे. यानी वी हैव टू डू अनदर वर्क, अ लेवल ऑफ वर्किंग. इसीलिए हम इसे बोलते थे ब्रिजिंग, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे क्या करता था, ब्रिज का रोल एक प्ले कर रहा होता था ओडीबीसी ड्राइव. गॉट इट? हिमांशु एंड अदर वन, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हम डेटाबेस तो मैनेज कर ही रहे हैं, बट डेटाबेस के साथ साथ हमें यहाँ पे एक डेटा सोर्स को मैनेज कर रहा है जो हमें एक डीएसएन प्रोवाइड करे, देन वी आर एबल टू मैनेज दिस. तो दैट्स सही. ये आज की डेट में क्या हो चुका है, ऑब्सोल्यूट हो चुका है इंडस्ट्री से. ओके, तो नाउ दिस इज. So now we can move to the first thing. Type 1 driver, that is called use bridging technology, require installation configuration on client machine. यानी यहाँ जो कुछ भी होगा वो कहाँ पे होगा, क्लाइंट मशीन पर होगा. Not good for web. An example ODBC bridge जो मैंने अभी आपको दिखाया. यानी अब आपके सिस्टम पे जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से एक्सेस किया जाएगा. आपकी MySQL है, MySQL को एक आईपी मिल जाएगी, तो वो आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो. ध्यान रखना, जो आपका MySQL इंस्टॉल होता है ना, आपको अगर आईपी पता है तो मेरा सिस्टम की भी आप MySQL को एक्सेस कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट सिर्फ क्या पता होना चाहिए आपको, मेरी आईपी, और आपको चाहिए पिंग करना आता हो, तो यू आर एबल टू एक्सेस माय डेटाबेस एज वेल एज, देयर इज नो प्रॉब्लम. तो टाइप 1 ड्राइवर का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था. टाइप 2 ड्राइवर ये होता था नेटिव एपीआईज. नेटिव एपीआई को कहते हैं कि मोस्टली क्या होता था, यहाँ पे आपको CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेसेस भी मोस्टली मिलते हैं. ठीक है ना. Require installation configuration on client machine and then used to leverage existing CLI libraries. Okay, usually not thread safe, mostly obsolete now. ये भी आज की डेट में क्या हो चुका है, लगभग ना के बराबर यूज हो रहा है. Example Intersolve Oracle driver, WebLogic driver and so on. There's a lot of drivers we have. Okay,
Now after this, we have another that is called the third type. Third type is called what? Middleware. देखो middleware and जो हमारा pure है, इन दोनों में ज़्यादा difference नहीं है. In middleware, what happened in the middle of that, we need to manage another server. यानी हम एक additional server को use करते हैं. That's why you can say calls middleware server usually on database host. Very flexible, allow access to multiple database using one driver, but only need to download one drive. But it's another server application to install and maintain. यानी जो हमारा एक work increase हो रहा है वो क्या हो रहा है, हमें एक another server को download करना पड़ेगा, यानी बनाना पड़ेगा, जिसको हमें क्या करना है, use करना है और maintain करना है. Clear everyone? Yes. Okay. So now second task, what we need to understand, and then we can proceed further. Okay. Type 4 that we have to use, that is called the 100% pure Java, and that is called the holy grail. It's a Greek word actually. Okay. Use Java networking library to talk directly to the database engine. Only disadvantages, need to download a new driver for each database engine. यानी हमारे पास जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है वो यही होता है कि हमें हर बार एक नया डेटाबेस इंजन क्या करना होता है, डाउनलोड करना है. जब भी कोई अपडेशन, जैसा मैंने अभी बताया ना कि अगर आप MySQL का 8 वर्जन यूज कर रहे हो तो आपको ये ड्राइवर यूज करना है, अगर आप ये यूज कर रहे हो तो आपको ये यूज करना है. किसी के में अभी भी कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है ना. सर तो ये डाउनलोड करने के लिए जो कनेक्टर दिया है वही ड्राइवर है? हाँ. ओके. किसी के में कोई क्वेरी रिलेटेड टू दिस? नो. ओके. तो नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, देखो बेसिकली क्या होता है, अब मैं पीपीटी पे ना फोकस करके थोड़ा सा आपको डिफरेंट अप्रोच में बता रहा हूँ कि व्हाट द क्लासेस वी नीड टू यूज हियर. ओके. सो फॉर दैट पर्पस we have some major classes that we need to understand. Okay, and that we can understand from here. I'm not going to talk on the PPTs most. Okay, so basically what we need to understand, the first thing we need to understand is called driver manager. Okay, this is the one. Second is we have another called that is called statement. And the statement is basically a 3 type. This is the 3 type. First is called a statement. Okay, then we can call the prepared statement, and the last thing is called callable state. Okay, these are the statement section. Okay, and after that we also have a driver measure. After that driver measure we have another class that is called connection class. After this statement we need to use a result set. What we need to use? Result set. Now I will tell you one more thing. All these interfaces as the classes belong from which package? Java.sql. All these interfaces are classes belong to which class? Which package? Java.sql.
SQL package. Clear, everyone? Yes. So now a question come in a mind ki what the difference between this. Driver manager responsible. If you want to create a connection, we need this driver manager. With the help of driver manager, we can able to create a connection. When we have a connection, then we are able to create the object of a statement. A statement should be any type that which you want to create. I will tell you in a brief later on how this statement work, how this prepared statement work, how this callable work and other things. Okay, now when we have a statement, then we are able to produce the results. So this is the 1, 2, 3, 4, and 5. That means the step. And before all this, we need to use the load the driver, and that's why we can use here that is called class dot for name. So this point is clear. So now class dot for name. In this, we have to always provide this thing. Com dot mysql dot JDBC dot driver. Mainly we can use this, but now we have to use com dot mysql dot. We can show you. We can use the CJ. What we need to use the CJ. How we can get the path of this? So obviously this is there. Just go there, open it with WinRAR. Don't extract it. It is not required. Okay. Now we have to go to the which section? Com, then MySQL, then CJ. Then we have after CJ what we need to use? JDBC, and in the JDBC you can see there's a call driver. You all are able to see? So I use the same exact path. See, what is written there? com.mysql.cj.jdbc. Why? Because if you want to run any package file, class file, we need to use the package name and then class name. So that's why we have to always use this for MySQL. Okay, everyone? Now, then means your driver is loaded now. Now we need to driver manager. In the driver manager section, we have another function that is called get connection. Which function we have? Get connection function. And in get connection function, we can provide a different kind of values, and then we are able to create the connection object. Clear, everyone? Okay, so now we after the getting the connection object, obviously we have connection now. We can move to the statement. A statement, this is a normal statement, and we can just spark the SQL queries, and then you can execute using this SQL concept. Prepared, that means you have to prepare the statement, pass the value when that should be executed and something. That time we need to pass the prepared statement. Callable statement we can use when you want to create, either you want to invoke any pre-existing view and some other thing. यानी अगर डेटाबेस के अंदर कोई कर्सर फंक्शन ट्रिगर्स बनाए गए हैं, तो अगर आपको उन्हें इन्वोक करना है तो मेनली किससे प्रेफर किया जाना चाहिए? कॉलेबल स्टेटमेंट को. Clear to everyone? Okay, and then we have our result set.
Statement is nothing. It's a normal statement that we can pass any kind of SQL query and then we can execute it. There's no problem. Okay, but a statement is very less used. Basically, we can use very less of the statement. This statement we can use very less. Why? I can tell you. I hope so. You all have listened to one concept. Injection, SQL injection. How many people have listened this word? SQL injection. Okay. क्या काम होता है? SQL इंजेक्शन का क्या मतलब होता है? बाईपास सिक्योरिटी। हाँ, तो ये स्टेटमेंट क्या होता है? SQL इंजेक्शन को सपोर्ट कर देता है, दिस स्टेटमेंट, ठीक है ना? तो इसीलिए क्या होता है, देखो SQL इंजेक्शन क्या होगा कि मतलब अगर आप कोई वेबसाइट हैक करना चाहते हो तो क्या होता है, हम ट्रू वैल्यू भेज के किसी भी वैल्यू को किसी भी मींस वेबसाइट में अनऑथेंटिकेट लॉगिन हो सकते हैं अगर वहां पे SQL इंजेक्शन सपोर्ट करता है, ठीक है ना? ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को क्लियर हुआ? यानी स्टेटमेंट क्या होता है, तो यह इसीलिए क्या कहा जाता है कि स्टेटमेंट से बेटर है हमें कहां पे फोकस करना चाहिए, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, यानी हमें इस चीज को यूज ज्यादा करना चाहिए। क्लियर? देखो फिर से बता दे रहा हूँ, SQL इंजेक्शन या PHP इंजेक्शन, ये दोनों वर्ड हैं वो होते हैं रिलेटेड टू हैकिंग, ठीक है ना? कि आप किसी वेबसाइट में अनऑथेंटिकेटेड यूजर की तरह लॉगिन करना चाहते हैं और अगर उसने स्टेटमेंट अप्रोच को फॉलो किया है तो आपको वहां पे एक कह सकते हो ना ड्रॉबैक या का एडवांटेज मिल जाएगा और आप किसी ना एनोनिमस यूजर से वहां पे लॉगिन करने में भी सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है स्टेटमेंट, तो हम इसको सबसे कम यूज करेंगे। क्लियर? लॉगिन के लिए हमेशा बेटर अप्रोच माना जाता है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ऑलवेज वन ऑफ द बेस्ट स्टेटमेंट इज व्हाट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। मैं भी आगे चल के मैं आपको सब लोगों को चीज बताऊंगा कि हम काम कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद आता है कॉलेबल स्टेटमेंट, ठीक है ना? कॉलेबल स्टेटमेंट का जो पर्पस होता है वो होता है कि जब हम किसी एग्जिस्टिंग जब हम डेटाबेस के अंदर जो चीजें बनाई गई, चाहे वो व्यू हो, कर्सर हो, फंक्शन हो, अगर आपको उन्हें कॉल करना है तो हम किसका यूज करते हैं? कॉलेबल स्टेटमेंट का करते हैं। अभी तीनों स्टेटमेंट क्लियर है सभी को? ओके, ठीक है। सो अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें एक टेबल क्रिएट करनी है। टेबल क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे कुछ काम करेंगे, देन वी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना? तो मैं आपको कंसोल से पहले सारी चीजें दिखाता हूँ, कंसोल से जिसको समझ में आ जाएगा फिर हम उसके बिहाफ पे आगे काम करते हैं, ठीक है ना? Okay, so I can open the console command line. Yes, okay. सभी लोगों को विजुअल होगा? If not, then I will make it the little bit largest 20. Okay, so now I type the password. That password you have provided, ठीक है ना? जो आपने पासवर्ड दिया था okay, so 10-minute break है and then we can start on 10:55. Okay, everyone?
ठीक है, okay. So okay, so everyone back. So now we can come to this control panel. So now there's a, I think you सभी लोग आप लोग aware हो कि databases पे कैसे काम करना है, tables कैसे create करनी है and so other things, ठीक है ना. तो normally अगर हम यहाँ पे databases देखना चाहते हैं, how many databases are there? So we have a simple one command is called that is so. This is correct to all of you? So you can see we are able to see all the databases that is available there. So we have an information schema, MySQL schema, performance schema, Schema, sys, word. Okay. So now basically what happens, sys and thing, sys, performance schema, MySQL information. All these are basically for this database itself. So we are not going to use this. We already have one thing that is called Sakila. That is already existed there. And then we have a word. So if you want, you can use the word. Use WORD word. Yes. So table C. Tables in Word. So we have a city, country, country language. So now if you want to see any data, select asterisk from city. See. So all the data is there. You can see every city information is mentioned there. Are you able to see everyone? Now after this, we also have a country. So we can say select asterisk from country. See. So we how many countries we have, that is also there. You can get the data. And now we have another thing that is called country language. So there's a lot of languages there mostly. Okay, so this is a basically one already DB that has existed. So we are not going to use this one actually. So we have to create our own. Okay, so for that purpose, we have to create a database, and we can create a one database schema. So how we can create? We can say create database. What's the name we can say? We can say student. And enter. So you can say we are getting here one information that is called query. Okay, one row affected and so on. How much time it will take? It's a take 1.15 seconds. Means the fractional time it will be taken. So now after doing this work, we have to see is your database is created. So what we can say? So databases. So I hope so you all see there. There's a one database is created. That name is what? Student. Clear? So we have to use this database. So we can say use student. Now, if you can execute the query, so tables, there is nothing. There is nothing. We don't have anything in this database right now. So question come in a mind, then how we can proceed this?
how we can manage this. So now for that, we are going to create a one table that is name is student. Okay, so we can say create table student. I hope so everyone is aware about this concept. Create table student. Okay, enter. Maybe you are thinking why we are using this, so now we can come back there. So there is a concept that is called, we can say, SID int, and then we can say what? Primary can we do this work? इट्स अ कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। तो इसका एडवांटेज क्या होगा कि एक स्टूडेंट आईडी सिर्फ एक ही बार एग्जिस्ट करेगी, दोबारा एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, करेक्ट। After this, okay, means we say that that is a student id is a primary key. Also we can say that we can use the auto increment. Okay, now after this we can create another field, s name, yeah, student underscore name. It's a bigger thing, so we can use it the varchar, and we can provide the name is 50. Not null. If you want to use, if you not want, it's okay, but not null we have for a student name. We need to use this concept. Okay, then we can use student age. We can say int, not null. Okay, student. Shit. We have done something wrong, so just a minute. We can copy paste, copy this, and we can write all the SQL here first, and then we can write on the there. We can just paste it. No, so we not required all these things. Not null. Then we can say that student city. It's a varchar 50, not null.
This is sufficient field, or you want to add more? Okay, we can add some more field. That is, we can say student underscore father var char, and we can say 50, not null. That's it. So now what we can do, we just copy this and then we can paste on which section, copy and come back there, and we can use this and put the semicolon and enter. So you can see one table is created with the name of this, and that now you can use sort tables again. We can get this table structure. DESC student. We can get all the structure. Is this point is clear to everyone? After doing this work, what we need, इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें इसमें डेटा रखना है. अब आपके मन में आएगा डेटा क्यों रखना है, सो दैट हम जो है ये डेटा दिखा सके सर्वलेट पे ऊपर, ठीक है ना. सो उसके लिए दो तरीके हैं, आइदर वी कैन कनेक्ट यूजिंग दिस पार्ट. ओके, तो यहाँ पे भी हम जा सकते हैं, देन वी कैन कनेक्ट एनीथिंग, एनी डेटाबेस. सो दिस इज ऑप्शन डेटाबेस, कनेक्ट टू डेटाबेस. So their database name is what we can say. We can say that database name is what? Student. Stored connection. So we have to this one. We can say student. Okay. What happened to that? Okay, we can add from there now, right now. Just wait. Okay. So we have one field is means auto incremented, so we are not required to provide this value. So what we can do, we have to some insert queries there. Okay. So how we can manage this? So we can say insert into, and where we need to insert a student. Okay. Then we have to provide the column name. All the column names should we need to provide there. If you want, you can do it. There's no problem. Okay. And the field should field जो है आप घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने फील्ड्स रखना चाहते हो, ठीक है ना.
तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। स्टूडेंट के बाद हमें क्या बताना है, यहाँ पे कॉलम्स बताने पड़ेंगे। तो हम कॉलम्स कौन कौन से बताएंगे, वी कैन कॉपी पेस्ट वन बाई वन। वन, एज, comma, name के बाद we can say user the city, then we can use the mobile, father, okay, something like this. And then so in the value section we have to provide name. We can in form of a string value go in form of a single quote, that's why you can provide as a Manish. Then we can provide the second thing that is called age 23, comma, city, we can say Patna, comma, we have another thing that is called student mobile, so we can provide any numbers. But that is also a string type we have used, so we can just write like this, and comma, then father, we can say Mahesh, something like this. Okay, copy this, and then we can paste it there. Semicolon, enter. See, so one query affected, that means एक data table के अंदर आ गया, select a string from student. See, now we can add more. Ramesh, mobile number is same, we can use it right now. Rakesh, one more data is added. Okay. Arjun, okay, 22. We can add some early, suppose that. Ankit, Anmol, 21. So now we have a few data so that we can use. Okay, आप पास कुछ डेटा आ गए जिसके पे आप हम इनको क्या करेंगे, यूज करेंगे. So अब second question आता है, how we can establish the connection. So now we can come back to here. Okay, यहाँ पे आएंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम यहाँ पे और फोल्डर बना लेते हैं, that is called new. और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, सी एवरीवन. और उस क्लास का नाम क्या रख देंगे, देखो com.patna, बट नहीं, हमें पैकेज बनाना है कौन सा, हमने कहते हैं com.db.service. क्लास का नेम रख देंगे db service, and then we can say we not required any kind of functionality there, so that's why I can say finish. Now we have a one class, that name is a db service. एक क्लास है हमारे पास कौन सी, db service के नाम पे. क्लियर एवरीवन. अब आपको सबसे पहला काम हमें क्या चाहिए, देखो ध्यान रखना, सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कनेक्शन की, ठीक है ना. तो हमें यहाँ पे क्या बनाना होगा, वी हैव टू सेट अप द कनेक्शन. कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट यानी कनेक्शन कौन इक्वल टू नल. क्लियर एवरीवन. हमने कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है जिसका हमने क्या रख दिया, कनेक्शन कौन इक्वल टू नल. सी, अगर टॉप पर आप देखोगे तो ये कहां से आ रहा है, किस पैकेज से आ रहा है, java.sql. और मैंने आपको वहां पे क्या बताया था कि all these things we can get from the java.sql. अब नाउ सेकेंड टास्क आता है हमारा ये class.forName. बट आप लोगों ने जावा पढ़ी होगी तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, स्टैटिक ब्लॉक. सभी ने यूज किया था, कितने लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है, ठीक है ना.
सभी ने पढ़ा तो आपको पता होगा यूज क्या है इस स्टैटिक ब्लॉक का। To initialize static variables. ठीक है ना। देखो हमेशा क्या होता है, जब भी ये क्लास लोड होगी ये स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। दैट्स सही। हम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कनेक्शन, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वी कैन यूज द ट्राई कैच ब्लॉक। गॉट इट एवरीवन, हमने यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक को यूज कर लिया और यहाँ पे हम एक एक्सेप्शन रख सकते हैं और वो एक्सेप्शन क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे आ जाएगा मैसेज एरर और फिर प्लस कर देंगे ई डॉट गेट मैसेज। सर यस, ये पैकेज में सिंपल जावा क्लास लेना है हमें। हम सिंपल DB जावा सर्विस। क्लास रखेंगे सब, ठीक है ना, और उसी जावा क्लास को यूज करेंगे अपने सर्वलेट में। ठीक है सर। ठीक है ना। देखो अब डीबी कनेक्शन बार बार लॉजिक उसके लिए हम क्यों लिखें, हम एक क्लास बना लेंगे, ठीक है ना, जिसे हम बेसिकली कहते हैं कि एक हमने एक लेआउट बना लिया कि हमें जहां भी कनेक्शन करना है इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें ये इसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब आपके मन में आएगा सर ऐसा क्यों, इसका एडवांटेज क्या होगा। देखो एडवांटेज होगा कभी भी आपको डीबी चेंज हुआ या पासवर्ड चेंज हुआ, ठीक है ना, तो आपको कितनी जगह पे जाके चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ एक फाइल में, और वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कहाँ पे हो जाएगा, सभी जगह पे हो जाएगा। क्लियर। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे दो चीजें करनी है। पहला पॉइंट ये करना है कि सबसे पहले तो हमने एक आपको काम बताया था, क्लास डॉट फॉर नेम, याद है सभी को, और इसके अंदर हमने क्या पास किया था, व्हाट हम लोगों ने क्या पास किया, व्हाट वी हैव पास देयर, कॉम डॉट mysql डॉट jdbc डॉट ड्राइवर। क्या सही लिखा है, सीजे सीजे इज मिसिंग। तो सीजे हमें जरूरत होती है, जो मैंने आपको बताया है, जो 8 पॉइंट अबव ड्राइवर है उसमें ड्राइवर आपको कहाँ पे मिलता है, mysql.cj.jdbc.driver। तो ड्राइवर यहाँ पे एक इंटरफेस है दैट वी आर यूजिंग। ओके, नाउ वी नीड टू यूज द एस्टैब्लिश द कनेक्शन। हमें एक एस्टैब्लिश करना है कनेक्शन, और अगर कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है कौन इक्वल टू, तो आपको पता है मैंने अब क्या क्या बताया था, हमें कौन सी क्लास की रिक्वायरमेंट है, ड्राइवर मैनेजर। और ये ड्राइवर मैनेजर भी किस पैकेज से आ रहा है, आर यू गेटिंग दिस क्लास फ्रॉम विच पैकेज, जावा डॉट SQL। एसक्यूएल। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डॉट गेट कनेक्शन, दैट्स इट। अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हमें तीन चीजें बतानी होती हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये तीन चीजें होती हैं। आप एज ए क्वेरी स्ट्रिंग भी भेज सकते हो, बट हम यहाँ पे नॉर्मल यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, JDBC कोलन mysql, ठीक है ना, कोलन कोलन / लोकल होस्ट कोलन 3308। ध्यान रखना आपको यहाँ क्या पास करना है, आपको बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट होगा आपका वो 3306 होगा, मेरा 3308 है इसलिए मैंने 3308 पास किया, एंड देन वी कैन पास इज व्हाट। अब हमें क्या पास करना है यहाँ पे, अपने डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम हमने क्या रखा था, स्टूडेंट। स्टूडेंट।
टेबल का नाम भी स्टूडेंट है और डेटाबेस का नाम भी क्या है, स्टूडेंट भी। So now, what the database name? We can pass as the student. Okay. What the username? So by default, database, my database username is root and password is also root. Clear, everyone? तो देखो यहाँ पे एक एरर आ रही है, ठीक है ना, कि कैन नॉट रिटर्न, तो इसे ऑब्जेक्ट को भी क्या बना दो, स्टैटिक टाइप को बना दो। क्लियर एवरीवन? अब आपको यहाँ पे ये चीज मिल गई, तो यहाँ पे आप चेक करना चाहो तो इफ कॉन इज नॉट इक्वल टू नल, यानी अगर इसके अंदर कोई वैल्यू आ रही है तो हम एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, क्या चीज, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ बता देंगे कनेक्शन, ठीक है ना। हमने यहाँ पे क्या बता दिया, कनेक्शन डन। अदरवाइज क्या बता देंगे, एल्स। सर वो 3308 का क्या बताया आपने? ये हमारा पोर्ट एड्रेस होता है, ठीक है ना। तो मेरा ऑलरेडी 3308 पे माई स्कूल 5 चल रहा है, ठीक है ना। तो मैं 8 के लिए मैंने उसे 3308 पोर्ट दे दिया है, ठीक है ना। ओके सर। मतलब मेरे सिस्टम में, आलोक सर एक मिनट, हाँ, जिन्होंने पोर्ट चेंज नहीं किया है, पोर्ट वैल्यू ऑप्शनल है। जैसे हम लोग लोकल होस्ट एक्सेस करते हैं ब्राउजर पे, 80 अगर पोर्ट होता चेंज करना पड़ता है? नहीं सर, नहीं करना होता ना। बट अगर आप अपने सर्वर का पोर्ट चेंज किए होते हैं तो रिक्वेस्ट के लिए क्या करना पड़ता? डिफॉल्ट चेंज करना पड़ता है। तो हमें ब्राउजर से भी HTTP रिक्वेस्ट के लिए भी पोर्ट वैल्यू देनी पड़ती, कंपलसरी होती है टू कम्युनिकेट। यस सर। तो उसी तरीके से यहाँ पर अब आप अपने डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट अगर करना चाहते हैं, डिफॉल्ट पोर्ट है तो ऑप्शनल है, मार्क कर लो इसको, ठीक है। बट अगर किसी ने पोर्ट चेंज किया है तो देना कंपलसरी है, डिफॉल्ट है तो उसे भी आप यूज कर सकते हैं। वही सर बता रहे। ओके, क्लियर हिमांशु? यस सर। तो जिसका डिफॉल्ट पोर्ट है 3306, उनके लिए ऑप्शनल है पोर्ट वैल्यू देना, बट जिन्होंने चेंज किया है उनके लिए कंपलसरी है। अगर आप नहीं देंगे तो कनेक्ट नहीं होगा। यूजर नेम पासवर्ड आपको अपनी मशीन के अकॉर्डिंग यूज करना है। डेटाबेस जो आप क्रिएट कर रहे होंगे, तो अभी फिलहाल सर जो राइट कर रहे हैं वही फॉलो कीजिए, ठीक है। बट यूजर नेम पासवर्ड आपको अपनी मशीन के अकॉर्डिंग यूज करना। तो आई थिंक मैक्सिमम का पासवर्ड MySQL है ना? यस सर। तो आप अपनी मशीन के अकॉर्डिंग पासवर्ड देंगे। यूजर नेम सभी का रूट है, और क्लास डॉट फॉर नेम में जो लिखा है एज इट इज लिखेंगे, कुछ भी इधर उधर करोगे तो नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें फिक्स हैं, इसको मेमोराइज करना होगा और यही बार बार यूज करेंगे आप। हाँ सर, दोनों राइट कर दीजिए यहाँ पर। सर एक और बात और किसी, पूछनी थी। हाँ बताइए सर जैम्प है, मैंने जैम्प किया है तो पासवर्ड कुछ भी जैम्प blank है तो रखना? भी जैम्प पर भी पासवर्ड ब्लैंक है, कुछ नहीं देना है, डबल कोट्स लिख दो बस। हाँ सर। जिसका पासवर्ड एम्प्टी है डबल कोट्स, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। अभी भी किसी को कंफ्यूजन होगा तो इस फंक्शन को आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें क्या क्या वैल्यूज प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है ना। दिस इज URL, ठीक है ना। URL का मतलब ये होता है कि जो आप कहाँ पे इस चीज को एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है ना।
सेकेंड थिंग होता है यूजर, आप कौन सा यूजर यूज कर रहे हो, एंड थर्ड थिंग इज योर पासवर्ड, वो पासवर्ड क्या है। ठीक है एवरीवन, ये पोर्ट ऑलरेडी मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है क्योंकि मेरा जो पोर्ट है वो राइट नाउ वर्क कर रहा है 3308 पे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये पोर्ट मेंशन किया है। बाय डिफॉल्ट माइस्क्यूएल 3306 पॉइंट करता है, उस कंडीशन में आपको देना ना देना कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। आप दे देते हो तो भी अच्छी बात है, नहीं देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हम कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं। देखो ये लॉग कभी भी आपको यहाँ पे जो मैंने system.out.println लगाया है, ये कभी भी आपको ब्राउजर पे नहीं दिखेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये होता है आपके कंसोल्स के लिए मैसेज, तो वो कंसोल का मैसेज यहीं पे दिखेगा, बाकी जो चीजें होंगी वो हम लोग सब ब्राउजर पे देखेंगे। नो, ठीक है ना। सेकेंड थिंग, अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे पब्लिक स्टैटिक मेथड, और उसका नाम रख देंगे क्या चीज, हमें वाइड नीचे में चेक कनेक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट, और उसका हमने नाम रख दिया गेट कनेक्शन। ओके, और यहाँ पे कुछ करना नहीं, जस्ट डू द वर्क इज रिटर्न कॉन। क्लियर एवरीवन? क्या सभी को ये पॉइंट्स क्लियर हैं? तो देखो हमने क्या काम किया है, देखो मैं और बहुत सारी चीजें नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक चीजें कर रहा हूँ राइट नाउ। बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, मैं बाद में वो करके दिखा दूंगा आपको यहाँ पे क्या होता है, ठीक है ना। हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सारे फंक्शनलिटी यहीं पे बना के इन्हीं को कॉल कर सकते हैं कहीं से भी। तो ना यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सिनारियो की ये चीज है हमारे पास कि हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया और उसके बाद हमने एक फंक्शन बना दिया पब्लिक गेट कनेक्शन, ठीक है ना। तो ये अब हम कहाँ पे यूज करेंगे, अपने एक सर्वलेट में यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग ने एक सर्वलेट और बना लेते हैं जिसको नाम रख देते हैं स्टूडेंट डेटा। राइट क्लिक, देखो बेटर अप्रोच, राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट, न्यू, एंड गो टू द सर्वलेट। अगर आपको सर्वलेट यहाँ पे नहीं दिख रहा है सपोज दैट, तो आपको जाना है अदर्स में। अदर्स में जाएंगे तो यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन इतने सारे दिखते हैं, ठीक है ना। आपको कम भी हो सकता है, किसी को ज्यादा भी हो सकता है नॉर्मली, बट आपको इतने ऑप्शन दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है ना। छोट कम हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा वेब। किसी को दिख रहा है वेब? सभी लोगों को दिख रहा है वेब? यस सर। ओके, वेब पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप वेब पे क्लिक करेंगे देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहे होंगे। सर्वलेट दिख रहा है सभी को? क्लिक ऑन दिस सर्वलेट एंड देन नेक्स्ट। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने पैकेज का नाम रखना। देखो अब अगर आप चाहो तो पटना पैकेज को यूज कर सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो हम डेटाबेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें करना चाहते हैं उसके लिए हम अलग पैकेज बना सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, फॉर्म डॉट, ठीक है ना, कोई भी एक नाम दे सकते हो, ठीक है ना। यू कैन से db डॉट पटना। ओके, दिस इज योर पैकेज नेम। तो हमने यहाँ पे क्या लग दिया, स्टूडेंट डेटा, एंड देन वी कैन से next if you want asynchronous and then finish. Now we can close this now. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, क्या रखना है कि इन सब चीजों को करने से पहले आपके पास एक ऑप्शन होता है, और ऑप्शन क्या होता है कि हमें यहाँ पे उस ड्राइवर को पास करना होता है। तो ड्राइवर को पास करने का बेटर अप्रोच होता है राइट क्लिक, गो टू द बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, and then go to this section, ठीक है ना, library, and then see already I have added here as a module connectors, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको रख दिया है MySQL कनेक्टर, यहाँ पे देखो मैंने ऐड कर रखा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है add external jar, क्लिक ऑन दिस, ठीक है ना। आपका वो जार जहां पे है वहां पे जाना है और आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे ले आना है, दैट इज कॉल्ड बिल्ड, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो जार का पाथ होगा, क्लास पाथ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन? रिपीट सर। सभी लोग कीजिए ना अपना सर। जार फाइल ऐड कर लीजिए, ठीक है, ग्रुप में शेयर किया था ना। हाँ सर। तो जार फाइल ऐड कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कंफर्म कीजिए सब लोग जार फाइल ऐड करके। सर 2 फाइल है ग्रुप में शेयर की। लेटेस्ट वाला यूज कर लो, ठीक है, 28। ठीक है सर।
अगर नहीं चलता है किसी का, इन केस एक्सेप्शन आएगी तो पुराना करिएगा। नहीं सर, पूरा अगर सब लोग वही यूज कर रहे हैं तो एरर नहीं आएगी सर। नहीं, हाँ, सबका MySQL लेटेस्ट ही है तो उसी के अकॉर्डिंग 28 ही यूज करो, ठीक है। जार फाइल ऐड यस सर। करो सभी। अपने प्रोजेक्ट में जार फाइल ऐड कीजिए बिल्ड पाथ में जाकर, और Just- चैट में कंफर्म करो। तो ऑप्शन ऐसे ही बता दीजिए ना। तो लाइब्रेरीज टैब में ही करना है स्टार्टिंग से आप बता दीजिए कैसे ऐड करना है। हाँ मैं वही कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करके जाइए उसमें प्रॉपर्टीज में, यस सर। वहां पे आपको बिल्ड कॉन्फ़िगर दिख रहा होगा, उस पे क्लिक करना, राइट क्लिक देन बिल्ड एंड कॉन्फ़िगर। तो ये जो जार फाइल है किसी स्पेसिफिक फोल्डर में रखनी है क्या, इंपोर्ट करने से पहले? लाइब्रेरी में जाके ऐड करो ना, लाइब्रेरी में हाँ जाइए। सर, अभी ये डाउनलोड्स में पड़ी है ना, तो अगर गलती से वो डिलीट हो जाए तो उसके लिए हाँ तो उसको कर लो ना, कहीं फोल्डर में रख लीजिए कहीं पर, वहां से हटा दो। ओके सर। कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं चाहिए ना सर उसको? अरे उसके अंदर कर दो, सर्वर के अंदर कर दो, अपने अपाचे फोल्डर में कर दो, ठीक है। जहाँ पे सर्वर है अपाचे वहीं पे कर दीजिए। build path and then configure build path everyone, okay। लाइब्रेरीज, ठीक है ना, यहाँ पे आता है ऑप्शन add class folder, either add class folder, anything you can do the work, ठीक है ना। add library is also there but this is not you have to use, ठीक है ना। तो इसलिए बेटर अप्रोच वही है कि आप कहाँ से करो, वहां से। और उसके बाद क्या कर देना है, जैसे ही आप इसे ब्राउज करोगे एक्सटर्नल जार, सर वो ऑप्शन डिसेबल आ रहा है। नहीं डिसेबल नहीं आ रहा होगा, डिसेबल ही दिखा रहा है सर वो ऑप्शन। सर नहीं है वो। आपने किसी चीज को अगर सेलेक्ट कर रखा होगा तो डिसेबल दिखाएगा, हाँ ये ध्यान रखना। सेलेक्ट करके नहीं रखना है किसी चीज को। सर एक बार फिर से रिपीट करनी। राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट, यस build path, यस। go to the build path and then configure build path. There is no option on configure build path. Sir, then आलोक सर अपनी स्क्रीन एक बार हटाइए, इन्हीं के किसी मशीन पे कर देते हैं। हाँ एक मिनट सर, शेयर करो कोई अपनी स्क्रीन। शेयर एनीवन, कोई भी एक शेयर करना तो बता देता हूँ मैं। स्टेप नोट कर लेना बाकी लोग, ठीक है। और आई थिंक ये स्टेप लास्ट डे भी बताया ऑर्डर था। पे नहीं जाना है, क्लिक ऑन द लाइब्रेरी सेक्शन, क्लिक ऑन द लाइब्रेरी, सी लाइब्रेरी एंड द टॉप टैब, top source project library, yeah। Now click on the, where you have clicked, just click on the Java build path again। It's on Java build path, sir. सर मॉड्यूल just click on the class path, just click on the class path, क्लास yeah। पाथ सेलेक्ट करो, क्लास पाथ select the top one, class path, here, yeah। now add external jar, where you put the jar, no, uncompress it, not use a zip one as a zip one। एक्सट्रैक्ट कर दूं? एक्सट्रैक्ट नहीं किया उसको, एक्सट्रैक्ट तो करो, जार फाइल ऐड करना है। ठीक है सर। डिलीट करो यहाँ से, हाँ कर लीजिए। कनेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए सभी। जार फाइल चाहिए ना तो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा।
जिसका हो गया कंफर्म करो चैट में। Those who have done, confirm in chat. ये सभी का होना चाहिए, अदरवाइज कनेक्टिविटी विल नॉट वर्क। ठीक है, ये प्री रिक्विजिट है। जार फाइल नहीं होगी तो आपका ड्राइवर लोड नहीं होगा। और लोड, जिन लोगों का लोड जो है उसके बाद वो चेक कर लें बिल्ड पाथ के अंदर क्या प्रोजेक्ट में आपको एक सेक्शन दिखेगा बिल्ड, बिल्ड के अंदर क्या वो लाइब्रेरी फोल्डर होगा, उसके अंदर क्या वो आपको फाइल दिख रही है नहीं दिख रही है? No, just click on this again, folder, yeah. Click on this jar, open. Now apply and then close, apply then close. Okay, now open the project explorer. विंडो मैक्सिमाइज करो सोनल, आईडी मैक्सिमाइज कीजिए। Yeah, now go to the build section here. No, go to the below section. You Bottom can see there's third written one, is bottom build से folder. third option. Build folder, yeah. Click on this. There is nothing. There is no. How you can click on the main again? रेफरेंस लाइब्रेरी में, और रेफरेंस लाइब्रेरी इसमें आया होगा, आई थिंक आ गया है। ठीक है, रेफरेंस लाइब्रेरी में देख लेना, उसमें दिखेगा। ओके सर। हाँ सर, उधर ही आए। हाँ सर, रेफरेंस लाइब्रेरी में आए। सर अभी हो गया ना? हाँ हाँ अभी हो गया। एसआरसी में क्या है मेन के अंदर दिखाना जरा, एक मिनट। Just click on this. Web, click on the meta INF and web INF now. Okay. If that is not reflected here in the web INF left folder, okay, so you can just do the copy paste also there. Okay. ऐसे मूव कर Okay, सकते हो? yeah, copy paste in the left section. अभी आ गया है, क्यों कर रहे? नहीं, यहाँ लिब में नहीं आया सर, वेब INF के फोल्डर में, that is required. You can copy from the folder, not from here. Copy from where? सोनल, जहां पे तुम्हारा ये जार है ना, वहां जाओ, कॉपी करो, then I will tell you. ओके ओके। सर लेटेस्ट वर्जन में पता नहीं को थोड़ा सा कुछ बग्स हैं, ये वो फॉरवर्ड नहीं कर रहा है यहाँ पे। कॉपी और यहाँ पे लेफ्ट पे रख दो। हाँ यहाँ पे जस्ट बिलो, नो इन लेफ्ट फोल्डर, या पेस्ट इट। एवरीवन, सभी लोग ये काम कर लें, ठीक है ना, और फिर अपडेट दें, देन मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखाता हूँ, ठीक है ना? डन। ओके। नो, सो यहाँ पे लोड हो गया, ठीक है ना? सो आई थिंक सभी लोग ये चीज कंप्लीट कर ले, उसके बाद सभी लोगों का हो गया। विशाल अभी तक नहीं हुआ आपका? हेलो, नहीं सर। ओके, सो क्या करना है, राइट क्लिक, ठीक है ना? कहाँ पे जाना है? बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, and then you can add the library. See the library and then you have to add the external jar. थोड़ा सा ब्राउज करने पे थोड़ा टाइम लगता है, तो दैट्स सही। आई एम नॉट डूइंग दिस मच। हेलो सर। यस, वो लीफ फोल्डर में नीचे वो पूरा फोल्डर ही कॉपी पेस्ट किया, मतलब कुछ बाकी का भी पूरा फाइल आ रहा है। फोल्डर नहीं करना है, सिर्फ जार फाइल करना है, ध्यान रखना। कनेक्टर जार फाइल ना? हाँ ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, जार फाइल, ठीक है ना?
विशाल इतना क्लियर हो गया? सर प्रोजेक्ट पे बिल्ड पाथ सेट करना है ना? हाँ एग्जैक्टली, बिल्ड पाथ सेट करना है, हो जाएगा। हाँ सर, ओनली लिब में डालना है ना, बाकी कुछ नहीं डालना। हाँ लिब, देखो अगर आपका डायरेक्टली वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, बट अगर डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, लिब में नहीं जा रहा है फाइल, तो आप उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हेलो यस सर, बिल्ड पाथ में जाके जावा बिल्ड पाथ में क्या करना है? लाइब्रेरी सेक्शन में जाओ। JRE सिस्टम लाइब्रेरी। हाँ तो यहाँ पे देखो रन टाइम, मतलब यहाँ पे आपको एक्सटर्नल जार्स ऐड करने हैं, क्लिक ऑन द ऐड एक्सटर्नल जार्स। ऐड एंड देन ऐड कर दो, ऐड एक्सटर्नल जार, और उसको जहां पे आपको जार फाइल है वहां से उठा लो। ऐड का ऑप्शन डिसेबल्ड है सर। सेलेक्ट करो ना नीचे कोई फोल्डर, कुछ ऑप्शन आ रहा, अपाचे सर्वर कुछ भी आ रहा, सेलेक्ट कर लो। मॉड्यूल पाथ, क्लास पाथ। मॉड्यूल नहीं, क्लास पाथ सेलेक्ट करो, क्लास पाथ। उसमें कोई EAR लाइब्रेरी या अरे सर्वर क्लास मेंटेन? पाथ सेलेक्ट करके राइट में देखो ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। हाँ स्क्रीन शेयर करो अपनी विशाल, पहले तो स्टेप नोट करो आप लोग। ये स्टेप किसी भी एक्सटर्नल जार को ऐड करने का है, ठीक है। उस दिन आई थिंक आपको अपाचे के लिए भी यही स्टेप बताया था ना, जिसपे नहीं हो रहा था, अपाचे को मैनुअली ऐड करने के लिए। क्लास पाथ में ऐड करो, ऐड एक्सटर्नल जार। स्टेप पहले नोट ही नहीं करते तो कैसे करोगे? ओपन करो, ओपन, और ये जार फाइल सेलेक्ट करो। हाँ, हर प्रोजेक्ट में जिसमें आप ऐड करेंगे, ठीक है, कनेक्टिविटी का लॉजिक। हाँ एक्सटर्नल लाइब्रेरी ना है तो सर अप्लाई करके क्लोज कर दीजिए। ठीक है। हो गया सभी का इतना? जैसे अभी आप मान लो क्या करते हैं, सर्वलेट का नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो अपाचे ऐड करते हैं कि नहीं उसमें, सर्वर, तो सेम प्रोसेस, ठीक है। एक्सटर्नल लाइब्रेरी को यूज करने के लिए आपको उसे ऐड करना पड़ता है। सो सभी का इतना कंप्लीट हो गया? यस और नो? यस सर। ओके ठीक है। तो ना अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें ये देखना है कि हमें आलोक सर स्क्रीन शेयर नहीं, आलोक सर। हाँ पता है सर, अभी शेयर करें, ठीक है ना। ना तो हमें काम क्या करना है, हमने यहाँ पे एक ऑप्शन बनाया है डेटा डॉट जावा, ठीक है ना। यानी हमें जो डेटा, सॉरी नॉट दिस वन, ये है स्टूडेंट डेटा नाम का एक हमने और सर्वलेट बनाया है। हम जो डेटा दिखाएंगे वो यहीं पे दिखाएंगे, बट आज का जो मेन पर्पस होगा कि हमें पहले चेक करना है कि क्या हम उसका कनेक्शन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे गेट कर पा रहे हैं या नहीं। क्लियर एवरीवन? पहला हमारा मोटिव क्या है, वी हैव टू गेट, मतलब हमें यहाँ चेक करना है कि जो हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है वो इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे गेट कर पा रहे हैं या नहीं। तो आई कैन जस्ट शो यू, सी, डिलीट दिस। सो डू गेट रिक्वेस्ट होगी, दैट से हमें यहाँ पे क्या काम करना है, प्रिंट राइटर का एक ऑब्जेक्ट चाहिए। सो वी कैन क्रिएट द प्रिंट राइटर आउट इक्वल टू, तो प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट किससे मिलता है हमें, which function we have to use, रिस्पॉन्स गेट। response, okay। तो response dot get writer, हमें राइटर मिल गया। नाउ अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अब हमें चेक करना है वो कनेक्शन, तो उसको गेट करने के लिए लिखेंगे यहाँ पे कनेक्शन का ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, कनेक्शन कॉन इक्वल टू, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आपने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बनाया है डीबी सर्विस, याद है सभी को, और उसके अंदर कौन सा फंक्शन बनाया था आपने, डॉट गेट कनेक्शन, यही तो आपने बनाया सभी ने, यस और नो?
get अब एक सिंपल सा एडवांटेज समझना, अब हमें कनेक्शन गेट करना, हमने एक लाइन कोड लिखा, हमें कनेक्शन मिल गया, और ये कहीं पे भी आप कर सकते हो। तो आपको जो वहां पे आपने जो प्रोसेस किया है सारा स्टेप बाय स्टेप, वो कहीं भी फॉलो करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें क्या करना है, कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन के लिए क्या करना है, db service डॉट गेट कनेक्शन फंक्शन को इन्वोक करना है, हमें कनेक्शन मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे आप चेक करेंगे, इफ इज नॉट इक्वल टू नल, अगर कनेक्शन हमारा नहीं है तो यहाँ पे क्या करते हैं, एल्स एल्स में क्या लिखना है हमें यहाँ पे, वी कैन राइट हियर अगेन। तो यहाँ पे लिख देंगे आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे लिख देंगे कनेक्शन डन। ओके, और यहाँ पे अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब हमारा कनेक्शन क्या नहीं हुआ है, एस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो यहाँ लिख देंगे कनेक्शन नॉट डन। क्लियर एवरीवन? एंड नाउ वी हैव टू रन दिस, हमने इसे सेव किया और रन करा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या मैसेज हमें मिलना चाहिए? सर एक बार वो डीबी सर्विस का क्लास बताइए ना। हेलो, यस, डीबी सर्विस का क्लास सर एक बार, जावा ओके फाइल। श्योर। Server is already running somewhere. So I need to stop this Tomcat first, and then we have to run it. Just a minute.
Just check it. Just a minute. सर Yes. एक एरर आ रहा है सर, गेट कनेक्शन डीबी सर्विस कॉल किया ना सर गेट कनेक्शन के साथ मेथड, तो वो बोल रहा है क्रिएट मेथड गेट कनेक्शन इन टाइप डीबी सर्विस। डीबी सर्विस क्लास में गेट मेथड गेट कनेक्शन का मेथड क्रिएट करने को होता है। एक मिनट फिर से मुझे दिखाना कैसे कर रहे हो आप। स्टैटिक बनाया उसको हिमांशु? डीबी सर्विस को क्या सर? अरे जो मेथड कॉल कर रहे हैं हाँ सर स्टैटिक बना है। ये तो क्रिएट के लिए नहीं बोलेगा ये। आलोक सर, यस सर। डीबी सर्विस वाला कोड चैट में डाल दीजिए, कुछ लोगों का मिस्टेक होगा, मैच कर लेंगे। अच्छा ठीक है। क्लास का हाँ। क्यों बार बार चेंज नहीं हो रहा है? सर्विस भी नहीं दिखा रहा है ना, प्रॉब्लम तो ये है सर। ओके कितने लोगों ने कर लिया ये इतना पार्ट? ऑल ऑफ यू? कनेक्ट हुआ कुछ लोगों का? कनेक्शन मैसेज आ रहा है, कनेक्शन डन। कितने लोगों का हो गया? नैन अपना स्क्रीन शेयर करना जरा। यस सर। ओके यस शेयर इट। ओके सो नाउ यू कैन सी, सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कि आपको मैसेज मिल जाएगा ऑन ब्राउजर दैट इज कनेक्शन डन, ठीक है ना। और जो हमने वहां पे system.out.println के अंदर लिखा था कनेक्शन डन, वो देखो आपको यहाँ पे मिल रहा है। गॉट इट एवरीवन? सभी लोगों को क्लियर है इतना? सर हाँ सर हमने इधर भी कनेक्शन डन एंड कनेक्शन नॉट डन कंडीशन दी हुई है और इधर हाँ, भी है। इसका मींस दोनों में डिफरेंस क्या है ना? यस सर।
देखो जो आपने सर्वलेट के अंदर कनेक्शन डन लिखा है वो आपको ब्राउजर पे दिखेगा, ठीक है ना, और जो आपने वहां पे लिखा है वो आपको कंसोल में दिखेगा। देखो कंसोल में यहाँ पे कनेक्शन डन दिख रहा होगा, यस सर। ठीक है ना। तो यही एक मेजर डिफरेंस होता है कि अगर आपको लॉग्स भी देखो, अगर कोई भी इवेंट कोई सर्वर वेबसाइट एक्सेस करते हो तो उसका एक लॉग जनरेट होता है, ठीक है ना। तो लॉग तो ब्राउजर पे दिखेगा, और किसी को अगर डिबग करना होता है कोड को तो वो अपने कोड्स को डिबग के लिए मेंटेन करता है फाइल्स, तो वो सारी फाइल्स को कहाँ पे रखता है, लॉग। बट ये प्रॉपर वे नहीं है, ध्यान रखना। उसके लिए कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है लॉग डॉट ई कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, ये लॉग डॉट डी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें यूज की जाती हैं। यहाँ पे भी आपको ये सिर्फ है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन होगी ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंसोल पे दिखती है, और बाकी जो आपने काम किया वो कहाँ दिखता है, वेब पे दिखता है। अब एक काम और करना, चलो कम टू द माय फर्स्ट सर्वलेट। यस ओके, एक आउट डॉट प्रिंटलन अगेन लिखना, द सेम थिंग, कॉपी एंड पेस्ट, कनेक्शन डन वाला पूरा पार्ट उसी ए ब्लॉक के अंदर पेस्ट करना। इधर करना है सर। या एग्जैक्टली, पेस्ट इट एंड रिमूव ऑल द मैसेज देयर, ऑल द जितना भी मैसेज दिखा पूरा डिलीट कर दो, डबल कोट्स भी। राइट नाउ कॉन डॉट, जस्ट टाइप कॉन डॉट, यहाँ पे होगा एक गेट कैटलॉग, just run this now. No, but we need to manage handle the exception, but before that do the try catch, put all the things in the try catch. You have exception now. पूरा कोड क्या करना, यहाँ से नहीं, सिर्फ ये क्या नाम है, कनेक्शन के बाद से पूरा कोड ट्राई कैच में डाल दो। एरर पे क्लिक करो, ट्राई कैच के लिए बोलेगा ना वो। सर एरर पे हाँ, क्लिक करो। क्लिक ऑन दिस, भाई आईडी पे कैसे करते हो ट्राई कैच, या just थ्रोज लगा दो। click on this. सर किया सर, नहीं आ रहा है। अरे एरर मैसेज पे क्लिक करो ना माउस ओवर। तुम लोग आईडी यूज करना भी भूल जाते। एक मिनट जस्ट सब रिमूव करो, एस्केप प्रेस कर दो, एस्केप। ओके, नाउ क्लिक ऑन दिस एरर, जस्ट टेक कर्सर this error. इस पर ना? Yeah, click. Now click on this, surround with try catch. Click on this now. Now that's done. Now run this application. Now अभी यहाँ पे देखो, आपको कनेक्शन डन के बाद एक मैसेज आ रहा होगा, स्टूडेंट देख रहा है सभी को? हाँ सर। ये स्टूडेंट ही आपका कैटलॉग है, कैटलॉग इन द सेंस आपका डेटाबेस स्कीमा है, ठीक है ना। सो आज के डेट में आई थिंक आज तक इतना रखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, स्टूडेंट टेबल के अंदर जितना भी डेटा है वो हम सर्वलेट में दिखाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हम उसमें सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ऐड का, डिलीट का, और मींस सारे ऑपरेशन वन बाय वन ट्राई करेंगे वहां पे एग्जीक्यूट करने का, ठीक है ना। तो तब तक ये सारी चीजें आप सभी लोगों को कंप्लीट कर लेनी है, ऑल ऑफ यू। हेलो सर। सर यस तो सर, वो डाटाबेस का कमांड्स भी भेज दीजिए ना फाइल में। ठीक है, मैं टाइप करके भेज दूंगा SQL जो भी है। कौन सा कमांड हिमांशु? सर वो मैंने क्रिएट नहीं किया टेबल। क्रिएट मैंने क्वेरी ऑलरेडी आपको, अरे चैट रुकिए में तो दे दिया है आलोक सर एक मिनट। क्रिएट टेबल कमांड आपको नहीं आती हिमांशु? आती है सर, लेकिन मैंने किया नहीं है वो। क्या नहीं किया है? टेबल क्रिएट नहीं किया है। आज तक टेबल ही नहीं क्रिएट किया है? नहीं, स्टूडेंट का सर। आप अपने अकॉर्डिंग टेबल क्रिएट करो, जरूरी थोड़ी सर ने जो किया वही करो। आप अपनी टेबल बना के यूज कीजिए। तो सर इसमें एम्प्लॉयज एचआर कनेक्ट कर सकते हैं क्या डायरेक्टली नहीं विदाउट सीस? माई एसक्यूएल पर करना है, अब आपका ओरेकल नहीं यूज होगा। ओके नहीं ठीक सर, है। अगर इन्हें ऑरेकल यूज करना है तो मैं कल उसका डे भी बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिसको माइस्क्यूएल पे वर्क करने में प्रॉब्लम है, अभी रुकिए मैं 1 आवर में आपको फिर ब्रीफ कर देता हूँ। और ये चीज हमने बताया था, माइस्क्यूएल कमांड लाइन पूरा। नहीं सर, उसमें प्रॉब्लम नहीं है।
क्रिएट टेबल क्वेरी अगर नहीं बना पा रहे हैं तो फिर यार ओरेकल पूरा पढ़ लिया, क्या पढ़ा आपने फिर? नहीं सर, टेबल आता है क्रिएट करने, हाँ किया तो नहीं है, खाली खाली क्यों नहीं कमांड किया, से वही ही। तो पूछ रहे हैं। टेबल क्रिएशन का असाइनमेंट नहीं दिया गया था आपको? नहीं सर, अभी जो सर ने किया वो नहीं किया है। अरे अभी नहीं किया है तो भाई आप उसका स्ट्रक्चर इतनी देर में तो याद हो गया होगा ना, उसमें क्या है, हाँ स्टूडेंट सर। आईडी है, नेम है, मोबाइल नंबर है, एज है, इतना तो कॉमन सेंस अब रखो। कॉपी पेस्ट कितना करोगे? आपको हाँ अपना सर, भी ठीक। माइंड थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा ना। यस सर। डेटाबेस ऑपरेशन रट के आप नहीं कर पाएंगे, याद रखो। सारी क्वेरी आपको सोचनी होती है, आपकी थिंकिंग पर होगा कैसे हमें वर्क करना है। यू हैव टू थिंक। सर की क्वेरी या हमारी क्वेरी या किसी ने करा दिया, दैट इज डिफरेंट थिंग, उससे बाहर निकलो अब। हाँ सर। समझ आ रहा है? हाँ, यस सर। क्वेरी आपने लिखा, उसमें गलती हो रहा, नहीं रन हो रहा, उसकी एरर सेंड कीजिए, वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है सर। ठीक। बट अब आप कह रहे हो क्रिएट की क्वेरी सर भेज दो, दैट इज टोटली नॉट अंडरस्टैंडेबल कि भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं हिमांशु। और हाँ सर। किसी को क्रिएट क्वेरी में दिक्कत है? अगर सर आप पूरा ओरेकल पढ़ने के बाद ये कहते हैं कि हमें क्रिएट की क्वेरी सर भेज दीजिए, तो ये तो भाई बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है एक तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर देखो, जो भी ऑपरेशन आप करेंगे डेटाबेस के, लॉजिक आप यहाँ से लीजिए, अप्रोच समझिए, कोशिश करो आप अपने डेटाबेस पे वर्क करो, ठीक है। एक डमी डेटाबेस कुछ बना लो, आप उस टेबल पे वर्क कीजिए। असाइनमेंट भी आपको मिलेंगे तो असाइनमेंट के लिए तो अलग टेबल होगी ही। समझ आ रहा है? यस सर। वो आपको हेल्प करेगा, उससे आपकी लॉजिक बिल्ड होगी। आपने सेम कोड कॉपी पेस्ट कर लिया तो फिर वही दिक्कत आएगी ना। यस सर। तो थोड़ा सा एफर्ट डालो, टेबल क्रिएट करो, अभी क्रिएट करो, 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। अपना कमांड लाइन ओपन करो, क्वेरी लिखो तुरंत। अगर उसमें दिक्कत आ रही तो बताइए, हाँ सर। अपनी एरर शेयर शेयर करो यहाँ पे, ठीक है। हाँ सर। सोल्यूशन ये है, सोल्यूशन ये नहीं कि सर आप भेज दीजिए कोड, वो तो भेज देंगे, कमांड लिखा है ये नोटपैड पर, ठीक है। फिर उसको हाँ आप सर। क्या करोगे, कॉपी पेस्ट करके रन कर लोगे। फिर अगले दिन अगर वही चीज नहीं होगा, फिर नहीं लिख पाओगे, दिक्कत वहां आएगी ना हिमांशु। यस सर। यस सर। तो उससे थोड़ा बाहर निकलने को सोचो अब। अभी तक आपने काफी, अब एक बार तो आपने एसक्यूएल पढ़ रखा है, अब ये रिपीट हो रही ना चीजें। तो जब हाँ चीजें सर। रिपीट हो रही तो आपको कोशिश क्या करना है, खुद से राइट करना। हाँ, सिंटैक्स एरर होंगे नो डाउट, बट जब सिंटैक्स एरर करेंगे तो आपको समझ आएगा। किसी की सर्वलेट में कोई क्वेरी है? सर हेलो, यस। एक बार मतलब फ्लो समझा दीजिए ना 5 मिनट में पूरा जो किया हाँ था। सर, और वो जैम्प का क्या यूज है सर? मतलब अभी देखो, जैम्प का कोई यूज नहीं है, सिर्फ जैम्प का ये यूज होता है कि हमें किसी सर्विस को स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, उसके लिए जैम्प का यूज किया जाता है, ठीक है ना। जो अभी वर्क बेंच पे हमने हमारा डेटाबेस खोला, वहाँ पे डेटाबेस का वो एक यूजर बनाया स्टूडेंट नाम का, उसमें एक टेबल बनाया हाँ, और उसको इससे कनेक्ट कर रहे, तो उसमें कुछ जैम का यूज है क्या? जैम्प से आपको सर्विस स्टार्ट करनी होगी, टॉम उसकी क्या नाम है, माई स्क्वेल की और टॉम कैट की, तभी आप रन कर कनेक्ट कर पाओगे ना। तो जैम्प आप लोगों ने कब इंस्टॉल किया था, जिस पर माइस्क्वेल नहीं इंस्टॉल हो रहा था ना विशाल? हाँ सर। हाँ तो जैम्प हमारा एक एक्चुअली टूल है फॉर पीएचपी इन्वायरमेंट जनरली, ठीक, जिसपे हाँ पीएचपी, अपाचे वेब सर्वर और माइस्क्वेल डेटाबेस सर्वर का आपको एक पूरा पैकेज मिल जाता है। तो उस जैम्प टूल से आप क्या कर रहे हैं, माइस्क्वेल की सर्विस को यूज कर रहे हैं बस। जैम्प के साथ माइस्क्वेल इंस्टॉल हो गया है तो उसको आप यूज कर रहे हैं। तो जब आपको माइस्क्वेल से कुछ वर्क करना है तो आप पहले जैम्प को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वहां से माइस्क्वेल की सर्विस से स्टार्ट करते हो, फिर आप उससे कनेक्ट हो पाते हैं। यही कर रहे हैं ना। यस सर। उसी तरीके से अब जैसे माइस्क्वेल की सर्विस आपके पास चल रही है, तो आपका जीयूआई टूल वर्कबेंच है, उसको आप यूज कर रहे हैं। तो वर्कबेंच केवल क्या है, एक इंटरफेस है, और उसके पीछे माइस्क्वेल की सर्विस चल रही है।
उसी तरीके से अब जैसे आपने जावा कोड से क्या किया, एक इंटरफेस क्रिएट किया और इससे आप कनेक्ट हो गए अपने डेटाबेस सर्वर से, हो गए कि नहीं? माइस्क्ल से कनेक्ट हुए अभी हम लोग। हाँ सर। तो क्या आपने डेटाबेस सर्वर को टच किया? जावा एप्लीकेशन से जब ये कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ, क्या आपने डेटाबेस सर्वर को टच किया? नो सर। नहीं किया ना। तो ये एक इंटरफेस हो गया अब जावा एप्लीकेशन। उसी तरीके से वर्कबेंच को बनाया गया है। ठीक है, तो वर्कबेंच एक जीयूआई टूल है जिस पर हम अपने कमांड्स डायरेक्ट राइट करते हैं। बट यहाँ पर अब जावा में क्या करोगे, आप अपने कमांड्स को भी हाइड कर दोगे। मीन्स हमें क्या एग्जीक्यूट कराना वो पहले से पता होगा आपको कि यहाँ स्टूडेंट डेटा आएगा, यहाँ एम्प्लॉय डेटा जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट ऐड होगा, यहाँ प्रोडक्ट डिलीट होगा, यहाँ कार्ट मैनेज होगा। वो सारी चीजें आप बनाएंगे और उसके पीछे उसकी क्वेरी लिख देंगे। तो जब यूजर उस इंटरफेस से इंटरेक्ट करेगा तो उसे क्वेरी भी नहीं राइट करना और आपका ऑपरेशन भी परफॉर्म हो जाएगा। यही आपको करना है यहाँ पर। तो अभी तक जो वर्क था आपका डेटाबेस पर वो क्या था, आप कमांड्स लिख रहे थे। अब उन कमांड्स का भी हमें क्या करना, ऑटोमेशन करना। समझ आया? नहीं सर। तो वो पार्ट अब आप यहाँ जेडीबीसी से करेंगे। तो अभी आज का टास्क था कि आपका जेडीबीसी इन्वायरमेंट आपके लिए वर्क करेगा या नहीं, तो आपने उसको कॉन्फ़िगर किया, दैट्स ऑल। तो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में किसी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसका नहीं हुआ है वो लोग वेट करें, यहाँ पर अपनी एरर्स दिखाएं और उसको रिजॉल्व करें। जिसका हो गया वो लोग कंफर्म करें। कितने लोगों का कनेक्ट हो गया स्टैब्लिश, सॉरी कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया? सर मेरा वो अपाचे का एरर सॉल्व करना था। क्या एरर आ रहा है? सर स्क्रीन शेयर कर दो। कीजिए। कितने लोगों का कनेक्ट हो गया है माइस्क्ल से एप्लीकेशन के थ्रू? है कुछ लोग कि किसी का नहीं हुआ? कोड शेयर कर दिया सर ने, उससे भी हेल्प ले लीजिए। ठीक है, क्लास फाइल ऐड करो, अपना सर जार ऐसा फाइल एरर ऐड आ रहा की। है। 404 तो अलग एरर है सुमित। नहीं। हाँ, सुमित आपका वो प्रॉपर अपाचे नहीं करना यहाँ स्टार्ट भाई। टॉमकैट पर अपाचे, जैम पे क्यों अपाचे स्टार्ट कर रहे हो? ये क्या कर रहे हैं आप? कौन है? सर ये मेरा चालू है अभी स्क्रीन, निखिल। वो ये अपाचे का मेरा एरर आ रहा है। आप कौन सा अपाचे यूज कर रहे हो? अपाचे 9 यूज कर रहा हूँ। ये तो जैम्प वाला भी स्टार्ट किया क्या? नहीं सर, वो अभी शायद चालू किया होगा, लेकिन बंद पहले करो इसको। तो आपका सर्वलेट अभी तक रन ही नहीं हुआ? सर पहले रन हुआ था, लेकिन वो यहाँ पे जो डायरेक्टली ब्राउजर ओपन नहीं हो रहा था, इसके लिए मैंने चेंज किया था मेरा नया ये वर्क स्पेस यूज कर रहा था मैं, आईडी वाला इक्लिप्स का। तो उसमें वो पूरा बंद ही पड़ गया उसका, टॉमकैट का। यानी टॉमकैट आप फिर से यहाँ पर ऐड किए हैं ना? हाँ सर, फिर से ऐड अपाचे किया वाला मैंने। पहले, अपाचे का स्टॉप कीजिए पहले, अपाचे वाला। वहां से केवल माइस्क्ल यूज करना है। हाँ सर, वो कर दिया है स्टॉप। या कहाँ अभी कर चालू किया था। दिखाइए। ये दो दो ऐड है ना यहाँ, रिमूव करो पहले तो एक। कैंसिल कीजिए इसको, यहाँ नीचे से रिमूव कीजिए, नीचे से। तुम लोगों को इतना बताया भाई, एक प्रोजेक्ट वर्क सर करने ये लगे तो उसी रिमूव पे काम किया करो। था। डेली तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके 2-3 लोग बैठ जा रहे हैं, तो फिर पूरे टाइम यही करेंगे आप लोग। एक प्रोजेक्ट वर्किंग हो जाए उसी पे काम करो। पैकेजेस का ऑप्शन है ना। कोर जावा में कितने प्रोजेक्ट बनाए थे? सर ये पूरा निकल गया उसमें से, वर्किंग जो कोर था जावा वर्क में स्पेस आप लोगों ने कितना प्रोजेक्ट बनाया था? डेली नया प्रोजेक्ट बनाते थे हम लोग? एक ही बनाया था। एक ही बनाया था ना। कैसे काम किया था? पैकेज बनाए थे। पैकेजेस बनाते जाते थे जो नया टास्क होता था। हाँ सर। सेम वर्क यहाँ आप कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन यहाँ एक इश्यू है, हमने बताया था। सर्वर पे कुछ भी इधर उधर करोगे तो गड़बड़ करेगा, फिर वो हटाना, कॉन्फ़िगर करना, वो आपको करना ही पड़ेगा। आप देख रहे होंगे प्रोजेक्ट वर्क करते करते बंद हो जाता है ना काम करना। हाँ सर। ठीक है, तो थोड़ा सा इश्यू है यहाँ पर। हाँ, आप देखो इसको स्टार्ट करके सर्वर स्टार्ट करो।
सर नहीं हो रहा है, वो सेम एरर दे रहा है। इसका टॉमकैट का मैंने 2-3 बार 9 भी ट्राई किया, 10 भी ट्राई किया, और उन्होंने जो एक नया दिया था कि कॉन्फ़िग वाला जो फोल्डर है नहीं, उसमें इस पे एक मिनट राइट क्लिक करो इस पे, एक मिनट रुक दो, पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं।